diary on 23rd of January. We are playing this role in the Calcutta. So those who may come, please come. If they want to play and they want to take role in the play, please come. Somebody may be the Lal Bahadur Shastri, they may be something else. So those who want to play themselves, they want to involve themselves, please come to Calcutta. I will host all of you. This is from my side, and once I will say, where there is way, there is way. So please come forward and make a Viksit Bharat a success story, not only the place where to write here. Thanks so much. Thank you so much, sir, for those truly inspiring words that reminded us of the vision and mission behind organizing national conferences like this, to remind the Chartered Accountants fraternity their importance in nation building. Thank you so much. Having the participation from central leadership definitely makes this conference truly special. Having said that, may I request esteemed Chairman, CP Committee, ICAI, CA Satish Kumar Gupta to please share his thoughts with the House. Sir. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, good afternoon. Sir, I need your support. Good afternoon. I am not from this city, but I have come from Jaipur, friends, to see you, to meet you. So again, I would say, good afternoon, friends. So it's my privilege and pleasure that today I am here, and it is all blessings of Jagannath Lord. Friends, we have today with us Honorable Deputy Chief Minister of this wonderful state, Sri Kanakvardhan Singh Dev sir. We have with us Honorable Member of Parliament from this beautiful city, Srimati Aparajita Sarangi ji. We have with us my brother in the council sitting of the dais, Ravi Patwa ji. We have with us Chairman EIRC, Vishnu Kumar Tulchan ji. We have a wonderful and dynamic conference chairman. I heard his views about the Odisha and the Bhubaneswar, Rajiv Sekhar Sahu ji. And we have Chairman of the Bhubaneswar branch, very young and dynamic, Mahendra Kumar Sahu ji. Secretary, Bhubaneswar branch, Prithvi Ranjan ji. Regional Council members, office bearers and management committee members of the Bhubaneswar branch, seniors in the profession, and my dear brothers and sisters. Again, a very good afternoon. Friends, this is the program organized by the Committee for Continuous Professional Education. So it is my humble duty to welcome each one of you in this national conference on a very important topic, Bharat at the rate of 2047. And the speakers or the panelists the team have invited, branch has invited, are wonderful. And I think you all are going to get a very big value addition out of this national conference. Friends, we have with us Honorable Deputy Chief Minister of Odisha. Sir, this is the time when chartered accountants are not only working for the traditional side. We are working in the AI, we are working in the fintechs, we are working with the technical emerging opportunities for the profession. And being a very, I can say, the largest accounting body of the country, world, ICI, which came into existence through Act of Parliament. Sir, we can collaborate with the state government through our members in the field of AI training, in the field of GST training, in the field of training for accounting, in the field of training for fintechs, and in the field of training for the several literacy programs. We are working with all these things in several states. So if your government thinks it proper, we as a whole body, through our members, can come forward and
even train your officers in the field of AI and GST and all etc., which I have just discussed. Sir, chartered accountants can now work in double accounting system, in accrual accounting system, in project implementation. And sir, the most important part, which all the state government don't take care, but in my opinion, it is very important, to verify the assets of the local bodies, panchayat and municipal boards. Sir, even the panchayat and municipal boards are not aware what they have. If this work is being done by the chartered accountants, it can do miracle in the national development, as well as just to have that what we have as an asset. We can do the audit for pilferage checklist, sir, especially in the electricity department. We can go for the energy audit. We can go for the system implementation audit and several SOPs, sir. So these are the areas where our chartered accountants can work. So I would request, sir, because you are here and I heard a lot about you. The conference chairman have asked for the land, and I am asking you, sir, not being demanding, but just requesting that try to involve all these, I can say, financial minds of the country, the best financial minds of the country, and they can do wonders, sir. Friends, with this, I would like to talk something about the committee which I am heading this year at the ICI. I am heading the Continuous Professional Education Committee, which committee is organizing this program. Friends, 2-3 things about this committee this year. We are trying to give the quality and availability of the CP programs. And for this purpose, we are trying to open as much as CP chapters, as much as CP circles, as much as CP groups. Sir and madam, CP is a continuous professional education program. And sir, just to brief you, that ICI as a whole have organized more than 50 lakh CP hours program this year. 50 lakh CP hour program this year. So, just to have assurance about the quality, we are going to implement the world's best system this year, that we are going to provide CP credit only on real-time attendance basis. We are going to use the technology. With that technology, your mobile phones, which are registered with the SSP portal, will be taken care by that technology every 30 minutes. And whatever time our member attend the CP program, the member will get the credit for that particular program only for the period or only for the hours he has attended that program. This we are going to implement this year only. And friends, I would request and invite your interest. If you want to become a speaker on any topic, any subject, just mail cpadmin@ici.in. That team will contact you, and we would love to give an opportunity to each one of you who is interested to show his or her talent on any topic or subject. Apart from this, I am also chairman of the UDIN Directorate, friends. And I think you all love UDIN. You love? So we have done 3 important things this time. I think you would definitely welcome all those 3 steps. First thing, friends, from 1st of April 2026, no member would be entitled to generate 61st UDIN for tax audit. Meaning thereby, after exhausting of the limit of 60 tax audits, now UDIN will not allow you to generate the next UDIN for your 61st audit. So this we have implemented. And one more thing which our direct tax committee has implemented this year, my dear friends, that now one member can attest only 60 tax audits. Suppose I am a partnership firm having 4 partners. My eligibility is 240 tax audits. As of now, any one partner could have signed all those 240 tax audits. But from 1/4/26 onwards, the member can sign only 60 tax audits.
The member can sign only 60 tax audits, and that effect we have brought in the UDIN also, that no member would be in position to generate UDIN for the 61st tax audit. Another thing, friends, if your auditee goes to another chartered accountant for next year without paying your fees, and you are not in position to know the name of the succeeding auditor, now UDIN will tell you on your request the name of the succeeding auditor to whom you can connect or contact on anything which you want, that whether you want to give any technical knowledge or you want to talk about your outstanding fees. And one thing I think you witnessed this year only, that auditor's opinion, we have brought new thing in the UDIN portal. Whoever has done the audit this year must have found that particular clause. And that is very important clause, my dear friends, very important. And I think you will understand the importance of that after few time when we will have a data and we can represent before the government that why audit is necessary, why audit is important. Madam, I would like to play my thanks and the thanks from the ICI, madam also, that you supported us when we saw your support, when that, where we were in soup right now, that accountant definition was very much being challenged, and I was just being told by the conference chairman that it was you who also helped us. So I would like to thank you very much, but I would like to say you, madam, very important thing here. That in 1984, madam, tax audit provisions came in the institute, 84. And at that time, madam, only tax collection, direct tax collection total, corporate plus personal tax, was only rupees 3,500 crore. Only rupees 3,500 crore. And today, our direct tax collection is around rupees 25 lakhs crore. So apart from the policies implemented by the government, this particular profession, chartered accountancy profession, it should be appreciated for this particular achievement, because they are the persons who have brought this very much a big amount for in the kitty of the country. Apart from CP, friends, few things about the UDIN, after UDIN, CMP also. I am vice chairman there, Committee for Members in Practice. My dear friends, we have just made 3 important tie-ups with all with banks. One tie-up is for the credit card of the AU Bank. I think you must have some knowledge about that. Just to brief, that by subscribing that credit card, and if payment of renewal fees of ICI is made through that credit card, the member will get 25% discount on the renewal fees paid to the ICI. अच्छा नहीं लगा आपको? तो ताली बनती है ना दोस्तों? और this is lifetime free card. No charge at the time of entry and no annual charges. This is something very good we have brought, and several other features. You just go on the CMP site, see that particular benefits. You will find that wonderful arrangement we have made. We have also made arrangement with the HDFC Bank in regards to term loan, unsecured, although I think chartered accountants are not in need of any term loan or something, because we all are contributing to the country and we are doing very hard work. So the God is always blessing our profession. And we are coming up with software collaborations. We are coming up with the peer review. We are just trying to bring in auto mode. We are working on that 1 rupee tender is no more in our ICI. We are working to fix the minimum audit fees for the statutory audits. And lastly, friends, I would just want to say that kindly, if you have not registered for WOFA 2.0, WOFA 2.0 is a very big program our institute is going to organize on 30th, 31st January and 1st February in Delhi, Noida. So if you have not registered, 25,000 members are going to attend that program. And you have opportunity to meet, connect and networking with the international leaders, with the international participants, Indian leaders, Indian participants. So if you have not yet registered, kindly go for that. And friends, the theme, the Bharat at the year 2047, this is not possible without your involvement, without your participation. तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? ये आपको मानसिकता बनानी पड़ेगी, आपको आज से काम करना पड़ेगा, डेडिकेशन, डिवोशन, डिसिप्लिन के साथ. Then only we can see our country as a developed country in 2047. So friends, I would like to end my
this submission with the thanks to the Bhubaneswar branch for giving me this opportunity with this couplet. तुम सोच को बदल दो, तुम सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे. तुम सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे. तुम नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे. किश्ती को बदलने से क्या फ़ायदा, किश्ती को बदलने से क्या फ़ायदा. तुम धार को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे, किनारे बदल जाएंगे. जय भारत, जय एशिया. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir, for bringing in that fresh wave of energy that was very much needed while starting a national conference like this. And thank you for those very thoughtful words that reminded us in this extremely ambitious time when the nation is brave enough to dream big and achieve bigger. Chartered accountants are the assets who can facilitate getting bigger dreams possible with ease. So please put your hands together for yourself and the fraternity. Ladies and gentlemen, reiterating the words of our esteemed chairman, Conference Hosting Committee, the guest of honor for the evening is someone who inspires us in many ways, from being a brave, fearless bureaucrat who brought in many changes, many positive changes to the departments she worked in and headed, to an ethical politician who is working hard day in and day out with one vision to make the country a better place to live in, with special focus to our capital city, which is her constituency. She inspires her with her sheer hard work, dedication, and love for nation. Please put your hands together as I request Honorable Member of Parliament, Srimati Aparajita Sarangi, to share her thoughts with the House. Ma'am. Honorable Shri Kanak Vardhan Singh Devji, the Deputy Chief Minister of Orissa, Shri Rajiv Shekhar Sahuji, Shri Satish Kumar Gupta ji, Shri Vishnu Kumar Tulsian ji, Shri Mahendra Sahuji, all chartered accountants having come from different corners of the country to Bhubaneswar, ladies and gentlemen. It's indeed a pleasure and privilege for me to participate in the 22nd National Conference of the Chartered Accountants. And I am delighted much more than others because this is being hosted in Bhubaneswar, which I represent in the Lok Sabha. So this is indeed a matter of great delight and great pride for me. Friends, you, around 1,400 of you having come from different parts of the country, are extremely important for the governance structure, for the system of the country as a whole. Having put in 24 years in bureaucracy, and being a member of the Public Accounts Committee in the Parliament, and being the chairperson of the Defense segment of the Public Accounts Committee, I know how important your role is in shaping the accounting and finance landscape of the country. You are rendering yeoman's service. And I must compliment and I must congratulate each one of you for doing a commendable work. I will take you to 1st July 2017, address of Honorable Prime Minister in Delhi. It was your day, the Chartered Accountants Day. And in Delhi, Honorable Prime Minister had asked you a couple of things, and I start my speech, my deliberation with those words of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. He had asked you to prepare a roadmap for the years to come. He had asked you to dream big and scale heights. He had asked you
to know about the various dimensions of emerging technologies, and he did mention about forensic science. And he did say that the chartered accountant friends of our country should sit back and think as to what they can do for the millions and millions of aspirants who are youth. These are the words of Prime Minister Shri Narendra Modi ji. When we are talking of Viksit Bharat by 2047, when we are talking of India as a developing country going to the list of developed nation by 2047, and your role in it, I think the direction of our Honorable Prime Minister to you holds great relevance. You're extremely important because you are part of ICAI. ICAI is not just any society or any organization. ICAI has been established under the Chartered Accountants Act 1949, an Act of Parliament. 1st July 1949, ICAI came into existence as far as I know, and it was inaugurated by Mr. Sri Rajagopalachari, the then Governor General of India. You belong to that group. You belong to that organization. You do not belong to any other organization round the street. You are extremely important. So I think with these words, we should start this dialogue of 2 days. Friends, I had the opportunity of serving the government of Odisha and government of India in various capacities. And Honorable Deputy Chief Minister will bear me out. He has always been my guide and my philosopher. I have always looked up to him for guidance everywhere I have worked in Odisha and beyond. I'm just trying to put forth before you the kind of important role that you all are playing. You know, when you are in bureaucracy or wherever you are, you tend to get shifted. You go to different seats. And believe me, whichever seat I was transferred to, you'll be astonished to know that the first day when I used to pull the studies of all the individual oriented schemes for which shelf of projects, the beneficiaries had been sitting in a room would just draw up a list and give to the poor. We had started that time with the up to one. Your recommendations need to be list of developed nations by 2047. Your recommendations are. I was Joint Secretary in the Ministry of Rural Development. The audit report, so pleasant observation. And the observation, the biggest anti-poverty is grateful to you. You tell us how to spend, what to do and what not to do. Being the chairperson of the Defense Subcommittee of the Public Accounts Committee, a particular report was brought to me. Report number 19 of 2020, CAG report number 19, 2020, you can Google and see. This is about the CAG report on the defense offset policy of Government of India. You read the report and you are aghast. Around 19,000 crore, my dear friends, not one or two. 19,000 crore of Government of India not being spent properly. And this is poor implementation of the 2005 defense offset policy. And who pointed out? The Comptroller and General Auditors pointed out. And we are working on it, and we are going to kind of, take it up with the Ministry of Defense very soon. Series of meetings will take place in the days to come. I gave you 3 instances just to tell you that you are extremely important for the system. Friends, I'm extremely delighted that a very relevant topic has been chosen for this national conference. We are all dreaming 145 crore Indians, for heaven's sake, don't call it
140. We are 145 crore Indians now. 145 crore Indians are dreaming or aspiring to bring our country into the list of developed nations by 2047. And what do? Every sector has a role. Honorable Deputy CM has a role. Me as a parliamentarian has a role. Sri Rajiv Sahuji, my very dear friend, has a role. All of you have roles. Now, all of us have to sit back in these 2 days and ask ourselves as to what role? What role for us? We have to prepare the roadmap. How do you contribute? Can we have a more ethical society? Can we create that? Can we bring down corruption? If not to zero, at least to a certain level? We will be proud of that kind of society. Can we bring all the taxpayers under the tax net? The figure given by Mr. Satish Gupta ji definitely is enchanting, but I think we can aspire for more. There has to be culture. You are ethical people, professionals, extremely good, changing the vast landscape of accounting and finance. You're also trying to tell us as to how to look into the complexities of the tax code. You're helping us all. But then I think it would be extremely good if in the days to come, in the 2 days, and this conference would be extremely successful, if you come out with a list of recommendations based on your self-analysis, based on your deliberations as to how you help India. India is moving forward, I can say with all conviction at my command, and Honorable Deputy CM will definitely agree with me, and all of you will agree with me. As was told, we are the 3rd largest economy, bypassing Japan. 4th largest economy, bypassing Japan, and we would be the 3rd largest economy, bypassing Germany very soon. We have forex reserves to the tune of $690 billion in the country. Our bilateral trade with different countries has gone up to almost $800 billion. Imagine, one after the other. Unemployment has come down. The retail inflation we are proud of is almost, it's compared to other countries extremely low. And overall inflation is also below 6%. So we are definitely surging forward. We know how to handle our other countries. We are good to Ukraine and we are good to Russia, and we are quite firm with Trump's US. We know how to deal with our neighbors. We know how to deal with our problems within the country. That's what India is. Every sector we are looking up. Startups, more than 100 unicorns. And startups, you know how many we have in the country. At one point of time, there were so very less startups, and now we have so many. So I think we are all surging forward. And I'm telling you, we are in the land of Lord Jagannath. Friends, you have come from different parts of the country. आपने जगन्नाथ यात्रा को टीवी पर देखा होगा. अगर जगन्नाथ यात्रा में शामिल नहीं हुए होंगे, मैं उन लोगों की तरफ मुखातिब हूं, उन दोस्तों की तरफ मुखातिब हूं जो रथ यात्रा में यहां नहीं आते. आपने देखा होगा कि रथ को सब लोग मिलकर खींचते हैं. ओडिया रे आमे कहू छु, जगन्नाथंको रथको समस्तंको मिसिकी टाणीबाकू पड़ुछि. जणे लोको चाहिले जगन्नाथंको रथको टाणी पारिबो नाही. One person cannot pull the chariot of Lord Jagannath. Hundreds and thousands of people have to come together to pull the chariot of Lord Jagannath, and this particular act has a huge significance. Any good thing, any huge thing, making our country a developed nation by 2047 cannot be done by one sector. Politicians or bureaucrats cannot do. I think all of us have come together, and you are extremely relevant, you are extremely important in the system. So I think let us all pull the chariot of Lord Jagannath together. Jagannath के रथ को हम सबको मिलकर खींचना है.
ये आने वाला 2 दिन का सम्मेलन बहुत महत्वपूर्ण है। इस सम्मेलन में आप आत्म समीक्षा करें। You are the best financial minds. I'm sure you'll deliberate and get at the right set of recommendations, and I'll be grateful personally. I'm sure Honorable Deputy Chief Minister, for whom I have tremendous respect, would also like to have a report from you, the list of recommendations which he can talk about within the state of Orissa, and I as a parliamentarian can take it up in Delhi. But friends, I'm aware of the fact that my voters are sitting here. Twice you have been nice to me, and I really want you to be nice to me the third time too. So for that matter, I will definitely not forget the demands that you have put forth. Since you are doing a great job, since you are required by the society, since we need to pull the chariot of Lord Jagannath and make India a developed nation by 2047, I think Honorable Chief Minister, Odisha, Honorable Deputy CM Shri Kanak Vardhan Singh Devji, and me as a parliamentarian, all of us should get into your demands. One demand, want to have a library in a government accommodation in Bhubaneswar, and number 2, a piece of land. Now, my dear friends, I'm extremely delighted that I have a partner in crime today with Deputy Chief Minister sitting here. So now the demand is before him also. We will definitely take it up with the relevant authorities, with Honorable CM, Honorable Deputy CM very much is here, and I assure you that 2026 will be the harbinger of good tidings for ICAI Bhubaneswar chapter. Beyond this, I can't say. I always conclude, I love to conclude my speeches with 3 lines. You're doing great, you're doing good. Jim Collins ki kitab hai Good to Great. We have to move from good to great. I will just say 3 lines and I'll conclude, because all of us are looking forward to listening to our Honorable Deputy CM. Good, better, best. Never let it rest till your good is better and your better, best. So let's move from good to better and better to best. We are advancing towards the new year 2026. We all will be pulling the chariot of Lord Jagannath. Let's all be happy and healthy. Thank you very much. Thank you so much, ma'am. These fierce words will guide us in our path to give a more significant contribution to Amrit Kaal in future days. Can we have a louder round of applause, please? Everyone, give it up. Thank you. Ladies and gentlemen, every year, the topper of the CA exams are presented with gold medals. And also this year, we are presenting a Lifetime Achievement Award to a legendary entrepreneur whose contribution to the business community, to the state of Odisha is immense. So to facilitate and take forward this part of the evening, may I request esteemed Branch Secretary, Shri Prithvi Ranjan Pariji, to please join us here. Thank you, Sulagna. Esteemed Chief Guest of the occasion, Deputy Chief Minister of the State, C.A. K.B. Singh Dosa, respected Guest of Honor, Madam Aparajita Sadangi, Member of Parliament, Bhubaneswar, respected our CP Committee Chairman, Sri Satish Kumar Gupta ji, respected EIRC Chairman, our Vishnu Tulsian sir, and our organizing committee chairman sir Rajiv Sahu sir, and my MC colleague chairman of the branch CA Mohendra Sahu. Every year our Bhubaneswar branch gives gold medal. This practice has been started to some meritorious students.
And this time, we are recognizing one successful entrepreneur, and branch has decided to give a lifetime achievement award. And this time, we are felicitating Sri Tararanjan Patnaik ji. Sri Tararanjan Patnaik is celebrated. He is a celebrated first generation entrepreneur and a visionary behind the Falcon Group. This is one of the leading names in seafood export, aquaculture, agro-processing, real estate, and global trading. A hallmark of Sri Patnaik's leadership is his firm belief that the business must uplift people. He pioneered transformative aquaculture contract farming model that has improved livelihood of more than 10,000 farmers, providing them with training, market access, and crop insurance. His emphasis on women empowerment has created powerful social shift, with nearly 80% of the workforce in Falcon processing plants being women, who have gained financial independence and dignity through these opportunities. Sri Patnaik believes that real success is measured by positive impact that we create for the society. Through his vision, compassion, and tireless effort, he has uplifted countless lives, empowered communities, and opened door of opportunity for several people. Bhubaneswar branch of ICI presents Sri Tararanjan Patnaik Lifetime Achievement Award in recognition of his visionary leadership and contribution to the society. I request Sri Ranjan Behra, who is the CFO of the group, to come forward. Sri Tararanjan Patnaik is unable to reach here today because of delay in flight. He couldn't arrive it. So on his behalf, I request Sri Ranjan Kumar Behra, CFO of the group, to come here and to receive the award. I request Honorable Chief Guest, sir, Guest of Honor, Madam, to honor Sri Tararanjan Patnaik. Thank you. So now I am inviting four meritorious students, Sri Bipul Dayal, Sri Harish Raj Tiborwal, Sri Yash Agrawal, and Sri Rudra Narayan Puja Panda. Here we are felicitating these students out of a fund which is created by CA Prashant Panda and CA Rajiv Sekhar Sahu. Now I am requesting CA Prashant Panda sir to come to the dais and to felicitate our students. First I am requesting CA Bipul Dayal for securing highest mark in the November 2024 attempt. We are going to felicitate him. Bipul. Then Mr. Harsh Raj Tiborwal. Mr. Harsh Raj Tiborwal. I am requesting Sri Yash Agrawal to come to the dais. And Sri Rudra Narayan Puja Panda.
Thank you, sir. Thank you, madam. Thank you. Thank you, Shripari, for facilitating the reward and recognition. Congratulations, CA exam toppers, and thank you, Tara Babu, for your immense contribution to Odisha. And the lady who was bringing all the trophies, she is Jagruti. She's extremely sensitive. She'll feel bad if you do not give her the AI robot a round of applause. So while talking about being futuristic at this national conference, we are taking a step ahead. Ladies and gentlemen, the chief guest for today's evening sets a very rare example. A humble farmer, a tenacious entrepreneur, an old school orthodox politician who goes by the book, by the rules, by the ethics every single time, and at the same time, a very futuristic statesman whose only dream is to make Odisha a global brand. I think he's the kind of leader we need because he's grounded enough to remind you who you truly are, where your heritage, culture, roots are, and also futuristic enough to inspire us to dream big and to give our contribution to make Odisha Bikasit Odisha. Please put your hands together as I request our chief guest, Honorable Shri Kanak Vardhan Singh Devji, to please share his thoughts of insight. जय जगन्नाथ। मंच पे विराजमान श्री महेंद्र कुमार साहू, ब्रांच चेयरमैन, मंच पे विराजमान श्री राजीव शेखर साहू, चेयरमैन, कॉन्फ्रेंस होस्टिंग कमेटी, सीए विष्णु कुमार तुलसियान, चेयरमैन EIRC, सीए सतीश कुमार गुप्ता जी, चेयरमैन CPE कमेटी ICAI, सीए डॉक्टर पृथ्वी रंजन पाड़ी, ब्रांच सेक्रेटरी। मैडम, आपको सबसे लास्ट में एड्रेस करने के लिए इसलिए मैंने रखा कि 2 शब्द अधिक बोलना है आपके बारे में। Honorable MP Srimati Aparajita Sarangi, Madam, you were appealing to your constituents, your voters, asking them to vote for you a 3rd time. I don't think you need to do that. Simple reason, your name itself, Aparajita, means undefeatable, unconquered, and invincible. जिसके नाम का अर्थ ये है, तो उसको हराने वाला कौन है? I would like to start by thanking Rajiv for having given me this opportunity of being amongst such an excellent gathering of chartered accountants on a subject which is very dear for the entire country and with the vision of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Amrit Kaal 2047, when India is going to complete 100 years of its independence, where is India going to be positioned at that point of time? And as was being pointed out by Madam Aparajita Sarangi, that you are the policy makers, you will give the direction. All the chartered accountants, ladies and gentlemen present in this auditorium today, are the people who can guide and take the country forward. Today, India is at number 4. Very soon it's going to, as was being mentioned by Madam Aparajita Sarangi, that we are going to be very soon number 3.
But we are not going to be satisfied at being number 3. We are aiming for the top slot when we are going to throw Mr. Trump back. The vision of the Honorable Prime Minister. I remember having attended a seminar a couple of years back when Honorable Prime Minister Narendra Modi became the Prime Minister in 2014. And at that point of time when he was talking about Viksit Bharat, when he was talking about taking India forward, when he was talking about people, local for vocal, vocal for local, sorry. People were not believing in what he was saying at that point of time. And to be very honest with you, मेरे भी जहन में कहीं पे कुछ संदेह तो जरूर था. But today when we are in 2025, he has led from the front and he has made India reach where it has reached. Today you go to any place in the entire world and if people know that you're from India, earlier we Indians were looked down upon, today we are looked up to. And this is all because of one man who is in the right place at the right time and who's leading and taking this country forward. It is the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi. Friends, Rajiv was talking about land to be given and a building for setting up the library. I will put forth your request before the Honorable Chief Minister because he is also the Minister for General Administration. He will, I'm sure, take into consideration your request. The year 2047 is more than a milestone. It is not merely a marker of 100 years of our independence. It is the year that symbolizes our collective aspirations. A developed India, a confident India, a prosperous, inclusive, and innovative-driven India. As we stand in the middle of this historic Amrit Kaal, it becomes essential not only to celebrate our progress, but to chart a bold future-ready pathway. And in this journey, chartered accountants are not just professionals. You are custodians of trust, architects of financial discipline, and catalysts of economic transformation. CAs in Amrit Kaal, the drivers of India's next leap. India today is among the world's fastest growing major economies. Our physical reforms, digital revolution, and expanding entrepreneurial ecosystem demand financial leadership of the highest order. This is where the fraternity of chartered accountants holds a central and irreplaceable role. You ensure transparency in financial systems. Your strength, the credibility of businesses. Your support, entrepreneurial and job creation. You guide both governments and enterprises with rigorous analysis and prudent advices. And above all, you uphold integrity, the foundation of which our economic architect stands. As we envision Bharat 2047, the contribution of CAs extend far beyond audits and accounts. You will be the navigators of emerging domains, AI-driven,
finance sustainability, reporting, blockchain-enabled governance, forensic accounting, startup of valuation and global taxation framework. Our Orissa today invites our chartered accountants to partner with us in strengthening public financial management, catalyzing investment flows, enhancing corporate governance, promoting MSME formalization, and ensuring transparent, responsible, and sustainable development. Let us all work together so that when India turns 100, we can proudly say that we helped shape a Viksit Bharat, a nation standing tall as a global economic leader. I extend my best wishes to all delegates and declare the 22nd National Chartered Accountants Conference open. Jai Hind, Jai Jagannath. Thank you so much, sir, for reminding us Amrit Kaal isn't just a time span, it's a calling for the entire nation to do their share of duty for the country. And we, the CA fraternity, will definitely do that duty with utmost sense of dutifulness and love for nation. That's a promise. Ladies and gentlemen, Souvenir is never just a book or a journal. It's a compilation of our ideas, dreams, the journey so far and the road ahead. On this Red Letter Day, we would like to release the Souvenir. May I request Souvenir Committee to please join us on stage and facilitate the Souvenir launching. May I request Honorable Chief Guest and Guest of Honor to do the honor of releasing the Souvenir of this National CA Conference 2025. That's a spectacular sight on stage. The Souvenir Committee bringing the Souvenir onto the stage for the Honorable Chief Guest and Guest of Honor, releasing the Souvenir of National CA Conference 2025. With the theme Bharat at 2047, CA is for Amrit Kaal. And that's Jagrati back on stage with all grace and poise, bringing the Souvenir to the dignitaries for the release ceremony. We can't thank her enough for being such a useful hand. I wish we can keep her here forever. Shouldn't we be giving a heartfelt round of applause for the Souvenir that's being released at the inauguration ceremony? Thank you, Honorable Chief Guest, Honorable Guest of Honor, and all dignitaries on stage. Find yourself a copy, read it. This will motivate you in your future endeavors. And thank you, Honorable Chief Guest, Guest of Honor, for doing the honor of releasing the Souvenir of National CA Conference 2025. We have small tokens of love and gratitude for our Honorable Chief Guest and Guest of Honor. May I request Branch Chairman, C. Mahendra Kumar Sahu, to do the honor, please. I'll request the Secretary, Shri Prithvi Ranjan Pari, and Branch Chairman. Thank you, Souvenir Committee, for joining us on stage. May I request the host team to bring the token of gratitude we have for Honorable Chief Guest and the Guest of Honor. This is another very special moment on stage. These tokens of love will remind Honorable Chief Guest and Guest of Honor of our love. That's a beautiful Patachitra that represents. May I request the esteemed Secretary also to join us in the felicitation ceremony. Shri. I request Sri Ravi Kumar Patua, Central Council member, please join on the stage. The art Odisha is so proud of. This literally means our heritage, our culture. Beautiful Patachitra for Honorable Deputy Chief Minister Shri Kanak Vardhan Singh Dev, an Honorable Member of Parliament Srimati Aparajita Sarangi from the host team.
It's a spectacular piece of work. And this art definitely wins everyone's heart here. Please give it, ladies and gentlemen, give it a big round of applause for the host team to be so thoughtful in presenting beautiful tokens of love. That's a special request. We would love to see these works of art in their hearts and in their drawing room. And we can proudly say that's a gift from us. And that's a crystal souvenir with the faces of Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Member of Parliament. This too is a special gift from the host team. तालियां उतनी नहीं बज रही हैं जितनी बजनी चाहिए. With all our love and gratitude, we would like to thank Honorable Chief Guest and Guest of Honor for their kind presence and words of wisdom that set the day so bright for each one of us. I'll request Janvi Deo, past chairman, to please join us on stage to present the honor. It takes months for extremely professional artists to create a painting like this. The Patachitra isn't just a work of art, it's a piece of Odisha itself. So couldn't be a better gift for our chief guest and guest of honor than something that has our heart, that has our pride and honor. And that's a special crystal token of gratitude with the face of Honorable Member of Parliament. This is to remind both our chief guest and guest of honor that they are always in our hearts and minds, and we should always look forward to their guidance and motivation in our future endeavors. Thank you so much, host team. It's so wonderful and warm to think of something so beautiful for our guests. Thank you. Time for officially proposing vote of thanks, and may I request esteemed branch secretary, CA Dr. Prithvi Ranjan Pari, to do the honor, please. Esteemed members of the profession, respected delegates, honorable Central Council members, Regional Council members, past presidents, past chairpersons, media representatives. And my dear guests, this is a privilege for me to propose a vote of thanks on behalf of the Bhubaneswar branch of Institute of Chartered Accountants of India. We are greatly honored by the presence of Deputy Chief Minister Sri Kanak Vardhan Singh Deoji. Sir, your thoughtful address was inspiring, and it's actually set a meaningful tone to our conference. We express heartfelt gratitude for your time and for your encouragement. We are extremely thankful to you, sir. Thank you very, very much. I also express my sincere thanks to our guest of honor, Srimati Aparajita Sadangi, Madam. Madam, we are extremely thankful and grateful to you for your commitments and the speed at which you have extended your support to our branch. Your leadership style has created a trust and value in our heart. Thank you very much for reminding our role in the process of taking decision what to do and what to not to do. Thank you very, very much. I am thankful to Sri Satish Gupta ji, Chairman of the CP Committee, under whose supervision the entire conference is being carried out. Thankful for your guidance, for your support. I am requesting Bhartendu sir, please come forward and give a memento to Sri Satish Gupta ji. Past Chairman Bharat Tripathi is with us. Sir, kindly come forward.
We express our gratitude to CA Vishnu Kumar Tulsian sir, Chairman AIRC. Thank you very much for gracing the occasion, and thank you very, very much for your valuable words to motivate our profession. I am requesting Suru Venkateswarlu sir, our past chairman, to give a memento to Vishnu Tulsian sir. I express my thanks to our organizing committee chairman, Sri Rajiv Sekhar Sahu, branch chairman, Sri Mahendra Kumar Sahu, and how can I forget you all? Thank you very, very much for extending your support and joining here and enhancing our strength. One more technical session will be started shortly, and after that, there will be a program by Hasya Kavi Sri Dinesh Vohra. I request all of you join. That will be followed by dinner. And we invite all of you to join the dinner along with your family. Thank you very, very much. Thank you so much, Shipari, for proposing vote of thanks. With this, we declare inaugural session over. Namaskar, Jai Hind, Vande Utkala Janani. So thank you, friends. So we have a cultural evening today. So I request everyone, please come with your family. So we have Dinesh Bhavra from Mumbai. So he's a Hasya Abhineta, stand-up comedian. I request everyone, please join in the cultural evening today. So immediately we have a technical session. After that, we have the cultural evening.
Good evening, all. We are to kindly come to the auditorium and take up your seats. Hello, hello. Member, please come. We will start the session very soon. Requesting all the delegates, please come and take up your seats. With me, I, CA Imran Khan, we stand before you technical session of this conference. this technical session is on the topic, the changing landscape of auditing profession. For this session, we have with us CA Ravi Kumar Patwa, Central Council, C. Kumar Maheshwari, Treasurer, EIRC, CA Biswaranjan Suttar, Please come to the dais and grace their respective chairs. Please give a huge round of applause for all of we are likely to start. So first, Ravi Kumar Patwa sir. CA Ravi Kumar Patwa sir is highly accomplished chartered accountant and a prominent figure in the professionals, business and social sectors in India. Tapas Ranjan Pani sir, please come. Sir, please come and give the saplings and mementos to. Please give a huge round of applause. Biranji Narayan Mishra, past chairman, to come to the dais and
I would request CA Biranchi Narayan Mishra, past chairman, to come to the dais and welcome CA Mr. Mayur Agarwal with saplings and memento. Requesting all of you, please give a huge round of applause. Please give a huge round of applause. First thing first, for bringing this 22nd edition, but at Bhubaneswar, it's been quite a while that we are not restricting ourselves, been doing twice at least in a year. But of course, you might be finding lot of labels over next 2 days. Ponder where you are going to head. 47, and Jagriti standing behind me, which echoes the sentiment of our institute's motto, where Jagriti has a profound talk about this profession. And when you talk about, Governor was talking while he was deliberating, she talked about 3 instances where it's got the insight how to tackle real-time situations, and storytelling and the assurance goes hand in hand. The landscape changing is evident. If a profession is striving forward, is the profession is blossoming, or is the profession is at the pinnacle of it is, I'll rather choose the road where we are churning ourselves that whether this product in terms of assurance. Thank you, Bhubaneswar branch, for giving me the opportunity to set the stage for the Central Council member CA Ravi, Secretary EIRC Hariramji, and my very dear friend CA Vishwaranjan. The full talk says that he finally, absolutely speaking from the heart, this time the chance will be from the east. And once at a greater and greater pace, the Bharat will reach to the developed nation in the year 2047. CS for the Amrit shall also begin from the next year. Coming on to the changing landscape of our profession, this is a dynamic profession, answers to the world of asking the questions. Now we are shifting to the age one will be called as a better professional if we are good at asking questions, because the answers are already there. We have to be ready in the changing profession, wherein we all are going to be shifted from the double entry system of accounting to triple entry system of accounting. By itself, if a party is selling to its X distributor, automatically in the books of X, the entries of the purchases chain entry. So there has to be maintaining accountancy. Hallucination is also going to be a very, very big challenge for each one of us, and rather a new profession is going to erupt. Hallucination is an imaginary answer which nowadays AI tools are giving, which are not correct in nature. ChatGPT is giving this answer and Claude is giving this challenge to validate which of the 3 answers are more correct or neither of the answers. Different phase of our way to unlearn each element of income tax and relearn each element of Income Tax Act 2025. 4 new labor codes have come. As through GST, a greater number of chartered accountants, a big share of our industry has taken up the share of the indirect tax practice. I personally believe that through labor codes, our profession is going to sourcing and giving more and more consultancy services in GST Tagar Vasudeva, wherein the exam is giving us a new arena to think from. The GSM is there. Thank you, each one of you, to be here. Thank you. Thank you, sir. I would like to come and share your views on this matter. Jai Jagannath. Seated on the dais, Patwa, Vice Chairman EIRC, CAs for Amrit Kaal. Friends, what is Amrit Kaal? Amrit Kaal as from the date of independence, and that is being completed in 2047, and that
members, and today we are at the strength of world's #1 professional body in the world. We are doing audit, but we are doing at least not more than related to finance. We are at the topmost position. So we are now doing, हम audit भी करते हैं. This we are saying now. Balance sheet मिली या नहीं मिली. The financial that in half of the cases, half of the audits, when auditor used to audit, they were lost, not match. Trial balance मिला दीजिए. So that trial balance audit, that triggers reconciliation of trial balance, reconciliation of balance sheet is no more any. Now we do that. Now we do that. What is the compliance audit? Whether all the deductions has been properly made, all the payments to government exchequer has been made timely or not. Mao Caro, manufacturing and other company reporting, and that has changed to Caro, and how fast it has changed regarding reporting of assets. Now we are reporting by exception. Whatever is not covered, report. So that is the landscape changing in this. But now, and that is what? That is audit with the help of audit tools, audit methods in the way of auditing. And when in times to come, AI is taking place, landscape change in the auditing and audit reporting thereof during this period. And by the end of this Amrit Kaal, that is 2047, we are even unable to imagine that where the audit will go. Congratulations to the managing committee team of Bhuneshwar branch and is being enjoyed by all the delegates. So please give a huge round of applause for the entire organizing committee. We deliberated and discussed in length in large to that arena, and I will confine myself and I would like to talk Bharat. Bharat, that is India. It comes from the Article 1 of the Constitution. It could have been Bharat at the rate 2000. Thousands and thousands years of heritage with it. And in front of 75-year-old nation India, Bharat will always win. Friends, India will complete its 100 years of independence, 2047. Each day we are becoming 2047, and each day this Bharat and India is becoming the developed and hope in our hearts. But in 2047, when our country will wake up as a bridge between the aspirations and achievement, is the Amrit Kaal, friends. इसको हिंदी में दोहराना चाहता हूं, आकांक्षाओं की उड़ान और उपलब्धियों की धरती के IST की बात करूंगा. It's not the Indian Standard Time. I will talk about, I stand for innovation and trust. And this innovation has to be with integrity, because without integrity, this innovation will take us nowhere. When we talk of speed, उस समय 500 बिलियन डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड रहेंगे. इस लेवल पे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है. But then again our role will loop into this technology. We have to ensure that this technology, innovation, chartered accountant ensures credibility and integrity. Each one of you. Thank you so much. Thank you. Kumar Patwa sir. Sir, please come and share your... Including current chairman and of Sambalpur branch. I am sure there would have been, chairpersons of other branches. And of course, CA Sunil Sahu, sitting back there. I was looking for him in the front row. The Odisha Naresh, who was the first chairman of the regional council from Odisha. And I'm not naming the galaxy of leaders of the profession. I would not diverse the reason for the same. And my dear friends, ladies and gentlemen, Joy Jagannath. Friends, the concept of auditing started in our country when the Companies Act 1913 was promulgated. That is the first time that the concept of auditing came to our country. And then when
the Constituent Assembly decided to have the Institute of Chartered Accountants of India way back in 1949. The thought of a profession which would be the auditing profession. So the very birth of our institute is for auditing. Whatever we say that we are, and I'm sure Hariramji will disagree with me when he says we are doing 30 other services and auditing is a minuscule part of it. Whatever we say, we are chartered accountants because we are auditors also. And if there is army of the country, accounts are done of the government and of the corporate houses, have some sanctity and there is some sort of check on it. Our profession remained the profession of income tax for a long period of time. The chartered accountants, who were mostly chartered accountants, shifted to government and took the wrong decisions of 1960s. Country was 1976, which also had an effect on vitiating the mindsets of businessmen and making morally correct business houses corrupt business houses. It was because of the government policy. They're taking long strides, consulting and compliance service point of view. Friends, in those days, see, the auditing was more or less that, matching evidences were all physical. The concentration was on cash book. Sampling was totally. March महीना 3 महीना का voucher देख लिया, auditing हो गया. And the then president of the institute, Mr. R.C. Cooper, who was the brain behind promulgating Code of Ethics. I'll just tell you a short story about what chartered accountants were and what all of us should strive to become. In 1969, when nationalization of banks took place, he was a board member and the audit committee chair of the largest bank of the country, a past president of our institute. And post-nationalization, the most powerful person in the country instructed him to get a loan sanctioned. And look at the integrity of that person. He denied on face and said, as long as I am a director of this organization is not going to sanction this loan because the organization for whom the loan was to be sanctioned did not warrant the loan. I'm sure you all understand who was the most powerful person of the country at that point of time. So much so that this gentleman, Mr. R.C. Cooper, our past president, leave the integrity to what is, there is an all over thought this August gathering, that there has to be as long as the auditee is the appointing authority and he also pays and the regulatory expectations, in fact, is the talk of the town today. We all know what has happened with the standards on auditing 600 on the using the work of other auditors. We understand that the SA 600 should have undergone some change, but the manner in which high-handedness was shown by one authority, which to the best of my understanding do not have that authority. But still they showed that high-handedness, and most of the auditors have succumbed to it. We at the institute have finalized a revised SA 600, and day before yesterday the council has approved the revised SA 600 for public exposure. You all will get it and you can give your comments.
Of course, we only hope and expect that the Ministry of Corporate Affairs and the other regulatory authority, which all of you know and I am not naming, would actually find our reasonings correct, and specifically that authority does not take it as an ego fight and accept the revised SA 600 and MCA agrees to it. And today onwards, tonight I am going to start on behalf of the Auditing and Assurance Standards Board, of course under the guidance of our chairperson, C.A. Supriya Kumar, and with the help of all the AASB members and special invitees, revision of SA 299 as well, which is very much connected with SA 600. Friends, there is a continuous debate on compliance versus value addition. That debate has already started today. So as the landscape changes, you all know what the answer is going to be. Nobody will pay you. You know, there is another issue, that there is a huge mismatch in the risk and the reward so far as the auditing profession is concerned. Nowhere in the world auditing profession is so lowly paid. I would not go into the details of the reasons behind it. We are also responsible for it to some extent as a profession. But at the same time, nowhere in the world all the corporates are audited. In our country, all the corporates are audited. You must have already come to know about a proposal of the government to, in the companies which needs to be bank branch audits, we should only consider it as a bonus given by Lord Jagannath and accept it as a prasadam. So we have to look for new opportunities so far as the auditing profession is concerned. Most of you would be knowing that the Controller and Auditor General of India has started auditing of autonomous bodies where they are involving chartered firms. Most of you would have perhaps applied and got some work. And those who have not, and if you are in CAG panel, do apply whenever it comes, whenever it opens next time. Originally, they had planned for opening it after 3 years. I have not had a discussion of late on whether they are going to do it next year or is it going to remain, the same panel is going to remain for 3 years or whatever. But this is one good opportunity. A lot of work is going to come out of autonomous bodies. And the fees is also good. Because this is, the fee is given by the CAG, fixed by the CAG directly. It is not like the PSU audits where the PSU is fixing the fees. And there also, how many of you feel that whatever fees is given by the CAG is sacrosanct and that is the fees that we should ask for? How many of you feel that? Good. All of you know that we can always get that fees increased. I for myself have never had one CAG audit where I have not increased the fees by at least 50-60% in the 3-year or 4-year term, whichever I have audited. You all should do it. And all the board of directors will agree once you find out something. So please do that. Not to say that we are not going to report it. We are definitely going to report it. But the fear that we are not going to dig deep, irrespective of fact that we are going to dig deep, will make sure that they increase the fees. So it's all up to us. Indian Association of Gold Excellence and Standards. Anybody who has heard of this? Tapas Babu. Anybody else? No, sir. Chairman, sir, I am not going to say. Good. So there are a couple of hands which are, getting raised. Friends, Indian Association of Gold Excellence and Standards is an organization with whom we from the Institute of Chartered Accountants of India have undergone
We have signed an MOU, Memorandum of Understanding, whereby their members' audit will be done. The audit is more like a valuation and PV, but whatever it is a kind of an audit and it is an opportunity. Now, how big is the opportunity going to be? The reasonable estimate that we have made is that in the next 5 years, the total fees that is going to come from this work is going to be 1200 crores. The total fees for bank branch audit, which is coming today, is less than 900 crores. Not bank branch audit, all the bank audits, including all the PSU banks and private banks and cooperative banks and RRBs, everything. So this will give you an idea how big this opportunity can be. For those firms who are eligible, please do register. I was trying to have a physical session in Bhubaneswar and Guwahati, but then IAGES have said that they will only hold it in Calcutta. Calcutta already we have had a physical session, but we already had a session online and we will have more sessions online. Whenever we announce an online session, kindly attend that session where the IAGES personnel will tell us how to go about it, what is the work to be done, what is the fees. I can just tell you this much, that the fees ranges from 20,000 rupees to 1.5 lakh rupees for a small assignment, in fact, not a very big assignment. So the fees is pretty good. And I will still try that, in Bhubaneswar and Guwahati, they can have physical sessions. If not, definitely virtual sessions for the whole of EIRC we will have. So that is one opportunity we should think of. I'm talking about all these while talking about the, changing dimensions of audit, because these are things which I believe I need to tell you. If you are in auditing profession, you need to know. While I will keep giving my views on the changes in the auditing profession. So this is what is there today. So what are the changes envisaged for tomorrow? First change that I see coming is technology-driven full population testing. That is definitely going to come, and that's going to come very, very soon. So, that we have done the checks on test check basis may not hold good in the coming years. There will be continuous monitoring of data. Auditors may be putting in AI-driven tools for their auditees for continuous monitoring of data and generating real-time exception alerts which can help them in taking a professional judgment during the course of their audit. There will be a short shift from compliance-driven audit to insight-driven audit. So friends, there will be automation, and the increasing usage of automation will reduce manual tasks. And since that happens, since that is going to happen, the auditors will have to devote more time in one, analytics, and two, in judgment. As an auditor, we will have to do analysis of the data and take professional judgments. The manual task will go, everything will become automated. And this will require a tremendous skill evolution in the auditing profession. Additional knowledge of technology, of analytics, of artificial intelligence, all these are going to be there. In addition to that, there will be requirement for knowledge
of the business, the knowledge of the global environment, and knowledge of behavioral science as well. Now this will require a multidisciplinary, in fact the auditing profession itself will become a multidisciplinary exercise. And since it will be multidisciplinary, there will be requirement that the audit team not only has qualified chartered accountants, but it has information technology experts, it has engineers, it has valuers, it has actuaries. All these will come in within the large umbrella called auditing. From verification and compliance, our role has to change to value creation, to value creators. Friends, as long as the client feels that he has been imposed on something and he has to pay because of some imposition on it, it's never going to pay up. The day the client feels that whatever we are doing is helping its business in some way or other, is definitely going to pay up. The profession of auditing is going to change towards that, and that will also result in increase in the audit fees. There will be some other reasons. As I go along, I will talk about it, but I am very, very confident that there will be a galloping jump in the audit fees in the coming few years. Focus will shift to early warning signals on fraud risks and business risks. So, what audit used to do till today is detection of what has happened. From there, we are going to shift to prevention of something happening. There will be shift to predictive risk scoring and pattern detection, whereby we will also meet the stakeholders' expectation of reduction of frauds. That is a must for the auditing profession to survive. There will be an increasing shift towards other aspects of auditing, like ITGC, the Information Technology General Controls, like data governance. And our assurance will also shift. 10 minutes. Okay. I have been given a warning, so I will try and finish up as long as, okay. So there will be a shift to integrated reporting. You know ESG has come. The threshold for ESG is going to go down, and this too. Where financial regulator is doing. And ICAI is under tremendous pressure from the Green CA Amendment Act 21, and not proposed, in fact passed. The rules are yet to come. Members from the institute and 2 from the fraternity. And the chair will be somebody who is appointed by the government, who does not know why all this has happened, because somehow the stakeholders feel that from us. Of the institute pick up for checking have gone into overdrive. You all know about in peer review certificate by 31st of December. That is the last date. Before 15th of March. If you are a 3-partner or more firm, we are going to pick huge chunk of chartered accountants. We are going to recruit in FRRB and King also. Accounting professionals in the audit field in USA itself, only USA I am talking about. Similar is the dearth of auditing professionals in Canada and Europe that is going to come up in the next 5 years. So tremendous opportunity, global opportunity in the field of audit is going to come up if you can learn the standards of that particular country. And obviously, the fee that they have to
pay is definitely going to be lower for us than what they have to pay in-house there. But for that, perhaps, in most of the countries, you need to have a degree of that particular country, a relevant degree for auditing. Now you may say, who's going to pass out so many exams and going to do it? Just a simple example. One of my partners have recently become CPA Australia. How many papers did he have to apply for? One paper. Ladies and gentlemen, try and understand the importance with your degree commands in the world today. If an Australian CPA wants to become a chartered accountant in India, he has to appear for the whole of finals. If an Indian chartered accountant wants to become a member of CPA Australia, he has to pass just one paper. We are soon going to perhaps sign similar understanding with Canada. You know, the Institute of Singapore gives you a degree, associate membership of the Institute of Chartered Accountants of Singapore without even appearing for a single paper if you are there for 6 months. Such is the power that all of you command. And the whole globe is open to you so far as opportunity in auditing is concerned. Another very, very important thing, friends, when we talk about these changes in the fraud, having said that, financial statements are prepared based on assumptions and judgments. Go through the accounting policies when you write. How many places, city, branding, whatever the Big Four has been doing, you all will be able to do if you go. The time is ripe for you to take a call whether you will remain in assurance services, consulting services. There will be a teething trouble, there will be a definitely the function and trust on our profession and the governance that we are living aside thriving. So I'll request to ensure that our profession remains the most trusted in the world in the eyes of the society. Then only we can also take our country to the real goal of Viksit Bharat 2047. Thank you very, very much for the patient hearing. Thank you very much, sir, for your insightful views on today's topic. Now, I would request Mr. CA Hemant Goel, CFO, TPCODL, to come forward to the dais and offer memento to CA Ravi Kumar Patwa, sir, Central Council Member, ICI. I would like to request CA Rajendra Das sir, past chairman, sir, please come and present the mementos to CA Mayur Agarwal sir, vice chairman. I would now request Mustaq Bhai, Secretary, Cuttack Branch, to come forward to the dais and offer memento
to CA Hariram Agarwal, Secretary EIRC. I am requesting CA Somo Sunil Sahu, Treasurer, Bhubaneswar branch, please come and present the memento to our CA Aditya Kumar Maheshwari sir. I would now request Siva Sahu sir, past chairman, Sambalpur branch, to come forward to a dais and offer memento to CA Biswaranjan Sutar, member EIRC. Please have a round of applause. Please. So it is indeed a very knowledgeable session for all of us. But it's time to wrap up for today's session. So I would like to request CA Manoj Patra sir, past chairman. Sir, please come and present the formal vote of thanks. Jai Jagannath, respected friends and dais, CA Ravi Patwa, Central Government member, and Vishnuji, Mayur and Adityaji, Vishwa, our own friend. My dear friends, it's a great pleasure to stand between you and the Hasya Kavi. So for some time, please bear with me. And CA Raviji, our own friend, good friend, every time we meet you, we talk you, we get lot of knowledge. And you have proved us today a real communicator between the council, the institute and us. The kind of flow from 84, 98 and all the milestones achieved and given to the opportunity given to the members, as well as the current opportunities coming forward and challenges coming forward, especially your differentiation between the assurance and consulting, which is very aptly applicable to people like us. I really give a kudos to you and I will take it forward, and our young friends will definitely look at it, and looking forward to institute to give more guidances on consulting also. Assurance, of course, is our, it is a proven thing by us, and with consulting we are definitely proving in outside market, and people at corporate look at us in consulting. Yeah. Thank you. Thanks a lot. And yeah, many thanks to CA Ravi Patwa. And really you have proved today's conference a good kickstart or a good start this way. And good friend Mayur, young, energetic, your speak on Bikshit Bharat and the future profession was praiseworthy. And big hand to Mayur also. And Vishnuji, your experience, your talk itself is a great thought to us. And we are really happy to be with us here, and many thanks be here. And Aditya, I remember we are chairman at the same time, and we both traveled to all the way to Delhi for getting first time the central level awards
Aditya for Siliguri and myself for Bhubaneswar. I'm very happy to see you at the dais at this position, and you are a pride to all the branches in East. And thanks a lot to be here and give your thoughts to the profession. Vishwaranjan, what to say? You are our local hero, my younger brother, friend, and philosopher, guide to many young professionals here. And thanks a lot to throw your lights on the professional thought process to here. And thanks a lot to all of you. With this, we close the technical session for today. And let's wait for the leisure time and Hasya Kavi and dinner time. Thanks a lot, sir. Thanks a lot. Jai Jagannath once again. Thank you, sir. We are having a grand cultural evening after this. Please be with us. We are having a very grand cultural evening just now, so please be with us. Thanks to Mercedes-Benz and TNT Motors, they've given us the opportunity to be here as Expedition Drive. So it was one of the most beautiful drives, specifically coming out of the traffic of Gurgaon. This was actually a breeze. The drive was amazingly fun. I'm sure you would agree with that. It was 12 cars driving all the way from Delhi to Alwar to Tijara Fort. TNT gave me a wonderful experience about it. Over the fort, everything was really nice. The environment, the ambience, the food, everything was perfect. And looking forward to TNT for such more beautiful experience.
Hello. We have with us Hasya Kavi Dinesh Bawra and Rohit Sharma, very popular face of television and comedy shows. For this evening, we are with us Rohit Sharma. Rohit Sharma. Rohit Sharma from Mumbai is known for his clean comedy, which are enjoyed with families. After completing engineering in computer engineers, he followed his passions for making people laugh through jokes and poetries. He has performed many corporate shows for organizations. He got awarded in top 50 Indian Icon Award. He is entertaining people since last 10 years through different TV shows, etc. We must seen him recently in India's Laughter Champions on Sony TV. He is also very popular in social media
through his various reels, Facebook in various reels. So let's have a huge round of applause for Rohit Sharma. Please. देखिए, मेरा नाम रोहित शर्मा जरूर है, लेकिन आपको बता दूं मेरा क्रिकेट से उतना ही लेना देना है जितना सनी देओल का डांस से। रोहित मैं मानता हूं कि अब नई पीढ़ी में जो इन दिनों हास्य में काम करने वाले लोग आए हैं, जो कवि आए हैं, यू आर द बेस्ट। अच्छे प्रोग्राम को जमाने की पहली शर्त होती है कि अच्छे लोग बुलाए जाएं, अच्छे से कार्यक्रम किया जाए। करने के लिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा रोहित शर्मा। Jokes, his timings and his lifestyle makes everyone, namely UP CM Yogi Adityanath, Union Minister. मतलब खून को संचार बढ़ जाते हैं। कमाल की वीडियो है आपके, आई लव यू। दिनेश बावरा जी, आपके वीडियोस वगैरह सब मैं देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है। बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, बहुत हंसता हूँ। प्रेम नाम है मेरा, देखता हूँ और आपके वीडियो देख के प्रेम से हंसता हूँ और आपके वीडियो देख। तो इस शो की फाइल को आगे बढ़ा अपने नाम के साथ बावरा का जो I would now request CM. थोड़ा सा जहां कहीं से भी ऑपरेट हो रहा हो, थोड़ा सा अगर बढ़ जाए तो अच्छा। इस प्रोग्राम को शुरू करें उसके पहले छोटा सा निवेदन है। देश को अब एकता की जरूरत है, संगठन की जरूरत है। तो जितने भी लोग बैठे, मैं चाहता हूं सब अगर आगे आ जाएंगे तो हमें सुनाने में भी आनंद आएगा, आपको सुनने में आनंद आएगा। तो थोड़ा सा एक निवेदन है कि जल्दी से धीरे धीरे से सब लोग आगे आ जाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अगर लाइट ऑपरेटर हमें मेरी आवाज सुन रहे हो तो ऑडिटोरियम की लाइट अगर डिम हो जाएगी थोड़ी सी, तो पॉसिबल अगर होगा तो करके देख लीजिए, देखते हैं कैसा लगता है। साउंड थोड़ा सा शार्प हो जाए तो और अच्छा लगेगा, फीडबैक अच्छा हो जाए, साउंड का मॉनिटर अच्छा हो जाए। हाँ, क्योंकि आवाज थोड़ी सी ठीक नहीं लग रही है जैसी होनी चाहिए। तो साउंड ज़्यादा अगर जहाँ कहीं मुझे सुन रहे हो तो इसकी आवाज़ थोड़ी सी अगर ठीक हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बहुत अच्छा सर, आई जाइए बहुत जल्दी से, पीछे से सब लोग अगर आगे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, और अगर साउंड भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगा तो और अच्छा है जी। कैसे बेहतर हो सकता है साउंड, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, शार्प हो जाए थोड़ा सा, और थोड़ी सी वॉल्यूम अगर इसकी बढ़ जाए क्योंकि ऑडिटोरियम बड़ा है जी। बहुत अच्छे से बैठ जाइए। लाइट ऑपरेटर अगर आए हो, मेरी आवाज सुन रहे हो, तो अगर थोड़ी सी डिम हो सकती है लाइट अगर ऑडिटोरियम की तो वो देख लीजिएगा। बहुत बढ़िया सर, विराजिए। हाँ, बस बहुत धीरे धीरे थोड़ी सी डिम हो जाए ना। नहीं, आपने स्टेज की डिम कर दी। हाँ, तो बस हाँ ठीक है, बस इसको लॉक कर दीजिए। अब ये ठीक है। बहुत खूबसूरत चेहरे हैं सामने, आप सबको प्रणाम करता हूं। मेरी आवाज, जो भी लास्ट पर्सन यहां रो में बैठा है, अगर मेरी आवाज सब तक पहुंच रही है तो आगे से लेकर पीछे तक एक बार जोरदार तालियां बजाकर बताइए कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। हम इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। भगवान जगन्नाथ की धरती है, आप प्रणाम करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेकर के, आज्ञा लेकर के इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। कुछ नाम मेरे पास हैं जिनका जिक्र करना थोड़ा सा ज़रूरी है। आदरणीय महेंद्र साहू सर अगर सामने आए हों सम्मान करके, कि बैक स्टेज ही हैं मुझे नहीं पता, सर आ जाएंगे सामने, आ जाएंगे। हमारा सम्मान करने के लिए सर पहली बार मशीन आई, तो धन्यवाद है आपका कि सम्मान मशीन से नहीं कराया। हाँ, और सुनने की कि जिससे कि सम्मान भी बचा रहे और आत्मसम्मान भी बचा रहे सामने, तो हमें अच्छा लगेगा। हाँ, आवाज भी अब इसकी धीरे, हाँ थोड़ा सा
लो कर दीजिए, कोई खास बात है नहीं। धीरे धीरे हम शुरू करेंगे सर, कोई टेंशन नहीं। देखो क्या है, हाँ नहीं बहुत ज्यादा हो गई है, फिर से हाँ थोड़ा सा नीचे करेंगे इसको। आइए सर आइए। अच्छा कोई बात नहीं सर का, सर जल्दी से स्वस्थ हो जाएं, हम यही काम आ जाएंगे। अब आगे तो सब मुझे लगता है अभी क्या है, सर ने सचमुच बहुत मेहनत की है, हम लोगों से बहुत कोऑर्डिनेट किया, कैसा चाहिए कैसा सेटअप चाहिए। सर के लिए भी एक बार तालियां बजा दीजिए, हमें अच्छा लगे। सर हमें सुन रहे हैं? शाश्वत सर प्रणब दास अभिनंदन कर देता हूं और सब लोग एक बार तालियां बजाती है, तब यहां से दूसरी बात कही जाती है। तब मैं सुन रहे हैं लोग तो पूरे देश का ऑडिट करते हैं, आज हम आपके हंसी का ऑडिट करने आए। हाँ क्योंकि देखिए सीए क्यों गया, ये कि हर सवाल का जवाब रखता है, पैसा करोड़ों का खेल है, उसके लिए ये कहना तो बनता है जब पूरी दुनिया ये कहे कि ये बंदा कभी नहीं पास हो सकता, उसी साल वो बंदा सीए बनता है। हाँ आप लोगों की डिग्री से ज्यादा ना प्रोसेस महत्वपूर्ण है। हाँ आप लोगों ने हार नहीं मानी इसलिए सामने बैठे हैं, बाकी कई हम लोग अभी तो हम सर आपको बताऊं कोलकाता थे कल शो में, कुछ लोग आए हैं क्या? बहुत लोग हैं कोलकाता से भी, कल हम शो करके आ रहे थे तो हम लोगों की सीए स्टूडेंट था, वो ट्रेवल कर रहा था, तो जब वो एयर होस्टेस आई और वो समझाने लगी कि अगर इमरजेंसी में ये हो रहे थे, एयर होस्टेस को क्यों कह रही हूं, इन दोनों को तो नहीं बोल रही है क्योंकि आप सीए कर रहे हैं और इमरजेंसी विंडो पे बैठे हैं, ये विंडो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही खोलनी पड़ती है। कमाल है ना आप लोगों का, मतलब तो सच में मैं बता रहा हूं। लेकिन मुझे एक चीज आपके प्रोफेशन की बहुत अच्छी लगती है, मेरे इंट्रोडक्शन में बताया ना इंजीनियर है, कोई घमंड की बात नहीं है। हाँ सच में बता रहा हूं, मुझे आपके सचमुच इतना अच्छा लगता है कि डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, जितनी मार्केट में डिमांड है तो ये इंजीनियर स्टेज पे खड़ा नहीं होता। बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या मस्त आप सुन रहे हैं। बहुत टेंशन देना इस दुनिया का सबसे आसान काम है, हंसाना बहुत मुश्किल। शुरू करता हूं ना, डिजिटल युग है, रोबोट आ गया, बताओ डिजिटल युग है। आज के दौर में अगर आपको सुबह सुबह उठते ही किसी को एक व्हाट्सएप मैसेज कर दो और फिर उस मैसेज को डिलीट कर दो, सामने वाला टेंशन में, क्या था यार, हाँ क्या भेज दिया। टेंशन बहुत आसान है। अभी तो ट्रंप साहब ने टेंशन दे रखी है पूरी दुनिया को, है ना। वो भारत पाकिस्तान का ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, है रशिया यूक्रेन चल रहा है। मैं तो सोच रहा हूं सर कि यदि ट्रंप महाभारत युद्ध के दौरान भी होते, तालियां कम बजी हैं इस बात पे यार, क्या कहने। हाँ वाओ, आपको हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा। हाँ हास्य के साथ साथ हम अच्छी बात भी बीच में कह रहे हैं। टेंशन क्या है, हर जगह समस्या है चेयरमैन साहब। देखिए आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं, तीसरी समस्या पे सबकी तालियां आएंगी, दावा करता हूं। आजकल 3 समस्याएं बहुत बढ़ गई हैं। पहली, आदमी के पास काम नहीं, दूसरी, काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, और तीसरी, काम के लिए रखे हुए आदमी किसी काम के नहीं है। भाई बहुत अच्छा, वाओ। कोई बात नहीं। देखिए क्या है ना, हर जगह का अपना एक रंग है। हम कोलकाता थे कल शो करने के लिए, तो हमने सोचा वो नहीं ना, वहां अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू हुई है, तो हमने सोचा एक्सपीरियंस करना चाहिए कि कैसी है यार, कैसी बनाई होगी, एकदम जाती है अंडरग्राउंड, तो हम चलते हैं। तो हम दोनों गए, जाती है अंडरग्राउंड, तो हम चलते हैं। तो हम दोनों गए, दरवाजा खुला, एक लड़की आई, उस हुआ, मैंने कहा थैंक यू। अरे बोले सामने से हॉट,
हर भाषा में बहुत ह्यूमर है, इसका कोई जब का हूं, मुंबई रहता हूं, कोई राजस्थानी भी है यहाँ पे, कोई बहुत सर बहुत हो बहुत बढ़िया, राजस्थानी आए ये बड़ी बात नहीं है, रजिस्ट्रेशन करा के आए ये बड़ी बात। हाँ क्योंकि मैं मारवाड़ी हूं ना, मैं जानता हूं, बस बहुत अच्छा। देखो लाइट ऑपरेटर ने भी सुन ली, इससे बहुत अच्छा। देखो लाइट ऑपरेटर ने भी सुन ली, इससे पता चलता है कि भगवान के घर, पता चलता है कि भगवान के घर देर है, हो ही गई ना, तो बस बहुत अच्छा। लेकिन आप बेसिकली मारवाड़ियों देखिए क्या है, हम मारवाड़ियों की खासियत होती है सारी, बेसिकली मारवाड़ियों देखिए क्या है, हम मारवाड़ियों की खासियत होती है सारी दुनिया जानती है हम होते कैसे, दुनिया जानती है हम होते कैसे। ध्यान से सुनना, बात पहुंचे तो बताना। मैं मेरी कॉलेज फ्रेंड के दिनों गुजरातियों को बोलने का खतरा है तो अपन रिस्क लेंगे भी नहीं। डॉक्टर आया हिंदुस्तान घूमने, उसने भुवनेश्वर होश हो गया। बुक का टाइटल था हाउ टू बिकम डॉक्टर इन 30 डेज। ताली अगली पंक्ति पर आएगी, MRP 15 रुपए। बहुत अच्छा, ग्रेट ग्रेट। हाँ, हमारा कोई जवाब है क्या? हमारा कोई जवाब ही नहीं है। एक जापानी ऑटो किया, रास्ते में होंडा कार ने ओवरटेक किया। जापानीज बोला होंडा मेड इन जापान वेरी फास्ट, जापानीज बोला टोयोटा मेड इन जापान वेरी फास्ट। इतने में होटल आ गया। जापानीज ने ऑटो वाले से पूछा हाउ मच, ऑटो वाला बोला 2000 रुपीज। इन इंडिया वेरी वेरी फास्ट। तो हमारा कोई जवाब है नहीं। हिंदुस्तानी लोग बड़े जबरदस्त होते हैं। एक तो भी बहुत कंट्रोल में है। हाँ, हम तो जहां से आते हैं वहां खतरनाक हालत है। बहुत अच्छा है आप लोगों का। देखिए ठंड शुरू हो गई है, ऑब्जर्वेशन सुनना। स्वेटर पहन के सेकते हुए नहीं है। हाँ, सबका अलग अलग है ना, जमाना जैसे बदल गया, जैसे जैसे जमाना बदल रहा है। वो एक लड़का और एक लड़की जो एक दूसरे को डेट कर रहे थे, BMW कार में जा रहे थे। तो लड़के ने कहा लड़की से कि मैं तुमसे बहुत दिन से एक बात कहना चाहता था, आज कहने की हिम्मत जुटा रहा हूं। लड़की ने घबराते हुए पूछा बोलो। लड़के ने बताया मैं शादीशुदा हूं। लड़की बोली हे भगवान, तुमने तो डरा ही दिया था। मैं सोची ये BMW कार तुम्हारी नहीं है। हाँ, हर जगह समस्या बदल गई है। देखिए लेकिन क्या है, बहुत अच्छा, शादीशुदा लोग बैठे हैं सारे के सारे, है ना। उनके गले में होती है, उनका चेहरा ही यहां तक लटका होता है, तो तुरंत पता चल जाता है कि शादीशुदा है ना। नरेश सर कहाँ हैं? हाँ बैठे हैं आगे नरेश सर। नरेश सर, कोई विशेष चर्चा ना हो, एक बात आपको बताऊं, नरेश सर दिख गए हैं मुझे। हम मारवाड़ी लोग कुछ भी नहीं है। उड़ीसा का आदमी जो है ना, हाँ अगर अपनी पे आ जाए तो मारवाड़ी भी घर बैठ जाता है भाई साहब। हाँ नहीं सर, मैं बताऊं क्या हुआ। सर आए पीछे, एक तो सर ने इतना निगोशिएट किया है, उसका क्रेडिट नरेश सर को ही जाता है। अच्छा, इसके इतना निगोशिएशन करने के बाद भी सर आए पीछे, बोले रोहित जी, दिनेश जी, हम आपके वीडियोस देखते रहते हैं, आपके फैन हैं, चाय पीना चाहते हैं आपके साथ। हमने कहा बिल्कुल सर, अच्छी बात है, हमारा सौभाग्य है। सर चाय आई तो नरेश सर ने मुझसे पूछा रोहित जी चीनी कितनी चम्मच। मैंने कहा सर मैं मारवाड़ी आदमी हूं, खुद के घर पे तो मैं फीकी पीता हूं, लेकिन कहीं बाहर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी लेता हूं। नरेश सर ने जो जवाब दिया, इनके लिए तालियां बजाना। इन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। कहां जा रहे हैं आप? बहुत अच्छा, आएंगे चाय पिलाने ही जा रहे हैं बिना चीनी की। हाँ सर सर है, लेकिन क्या अच्छा आप सुन रहे हैं। हम शादीशुदाओं की बात कर रहे थे, क्या बीच बीच में कुछ कुछ बातें याद आ जाती हैं। आप लोग क्या अच्छा सुन रहे हैं। देखिए क्या है, शादीशुदा जीवन ना, पुरुष जो है ना सर, चेयरमैन सर, शादीशुदा पुरुष जो है ना, वो जीवन भर विद्यार्थी रहता है। जीवन भर, क्योंकि पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है और मां को लगता है पत्नी सिखा रही है। हाँ
जीवन भर विद्यार्थी रहता है। अच्छा, महिलाओं की एक बात क्या है मालूम है आपको, ये कभी भी डायरेक्ट नहीं बोलती है, हमेशा इनडायरेक्ट बोलती है। छोटा सा उदाहरण देता हूं, समझ में आ जाए तो तालियों से बताना आपको समझ में आ गया। जब भी पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो, इसका मतलब यह नहीं है कि करो, इसका मतलब यह है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। बहुत अच्छा। हाँ, हम इतने डरे हुए हैं सर, क्या बताएं आपको, हमें तो घर पे बोलने का मौका मिलता नहीं, इसके लिए ही बाहर भड़ास निकालते हैं। हाँ, ये सब होता सबके घर में है ना। आप तो क्या है, आप कितने ही बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाएं, हम कितने ही बड़े कवि हो जाएं, घर जाओ पत्नी एक ही बात कहती है, आप में तो अक्ल ही नहीं है। हम भी मुंडी हिला के कह देते हैं हाँ नहीं है, फिर मन ही मन सोचते अगर होती। ओहो, हाँ, हमारा क्या जवाब है। अभी मुझसे पूछ रहे थे दिनेश बावरा जी, क्या रहा आजकल का जमाना बहुत ट्रेंडिंग है, कोई अपनी पत्नी को जान बुलाता है, कोई अपनी पत्नी को हनी बुलाता है, तुम अपनी पत्नी को प्यार से क्या बुलाते हो? मैंने कहा मैं तो अपनी पत्नी को प्यार से गूगल डार्लिंग बुलाता हूं। बोले गूगल डार्लिंग क्यों? मैंने कहा क्योंकि मेरी पत्नी से सवाल 1 करो, जवाब 1000 देती है। हाँ, हमारा कोई जवाब है ही नहीं, लेकिन मैं महिलाओं का सम्मान बहुत करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाती हैं। जैसे आप इन्हें मकान दें, ये आपको घर करके देती हैं, आप इन्हें अनाज दें, ये आपको भोजन बना करके देती हैं, आप इन्हें मुस्कुराहट दें, ये आपको अपना दिल दे देती हैं। हाँ? मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती हैं। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, बोलने के बाद ही ताली बजाओगे क्या आप यार? क्या कहने, हाँ। वाह 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 वाह। अच्छा, आप सुन रहे थे कि आप अच्छा सुन रहे हैं, कोई डाउट नहीं है, अच्छे से सुन लीजिए हमें। हाँ, क्योंकि नरेश जी तो निगोशिएट करके चल गए। हाँ, अब आपकी तालियां ही हमारा पेमेंट है असली में। हाँ, जमाना क्या बदल गया है सर, बहुत जमाना बदल गया है। एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत बदलाव आया है, बहुत ज्यादा। एक छोटी सी कविता आपको मैं बहुत जल्दी से सुनाऊंगा, लेकिन जमाना जिस हिसाब से बदला है ना, एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव आया है। मेरा दावा है आज आप जितने भी सीए बैठे हैं सामने, आप सब बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए होंगे। हम 2 कवि इस मंच पे हैं जो पूरी दुनिया घूम रहे हैं, सोशल मीडिया पे वीडियो मिलियन में देखे जा रहे हैं। हम लोग भी बहुत नॉर्मल स्कूल से पढ़े हुए हैं। एक लाइन का अंतर सुन लीजिए, और अच्छा लगे तो तालियों से आशीर्वाद देना कि जब भी मैं अपने स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो स्कूल की इमारत को देखते हुए सोचता हूं कि मुझे बनाने में ये कितना टूट गई है। और जब मैं अपने बच्चे के स्कूल के सामने से गुजरता हूं तो सोचता हूं कि इसको बनाने में मैं कितना टूट गया हूं यार। वाह 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 वाह। जमाना क्या बदल गया। अंतिम रूप से 1 मिनट की कविता सुन लीजिए, फिर हम दिनेश बावरा जी को सुनेंगे। जितना भी समय हमारे पास है हम कोशिश करेंगे कि उतना सुनाएं। ऐसे वैसे हैं हम मारवाड़ी, जितने का तय हुआ है उतने का ही सुनाएंगे। नहीं, लेकिन बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, अच्छा आप सुनेंगे, हम अच्छा सुनाने की कोशिश करेंगे। मैं एक छोटी सी कविता आपको सुनाता हूं। आप सब इंटेलेक्चुअल्स के बीच में मैं हूं, तो अगर मैं अच्छी कविता ना सुनाऊं तो वो ठीक नहीं होगा। सुनिएगा, जितने अच्छे से आपने हाथ से सुना है उतने ही अच्छे से इस कविता को सुन लीजिएगा, तो मुझे लगेगा कि मेरा यहाँ आना सार्थक हुआ है। सब बड़े लोग बैठे हैं। देखिए, ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। पहले हम होटल्स में रुकते थे ना 5 स्टार में, तो हमें महंगी महंगी क्रॉकरीज में चाय दी जाती थी, अब कुल्हड़ पे दी जाती है। स्टारबक्स की होर्डिंग देखी हमने, उस पे लिखा था न्यूली लॉन्च्ड जैगरी कॉफी। आप सोचिए, इसी स्टारबक्स ने हमको कैपेचिनो, लाते और न जाने क्या क्या पिलाया। लेकिन अब भारत की जनता इतनी जागरूक हो गई है कि उसको भी जैगरी पे आना पड़ा है। वाह 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 वाह, है ना।
होटल में या 5 स्टार में ना पहले जो ब्रश भी होती थी, जो कोम होता था, जो वो लोग रखते थे बाथरूम में, वो भी प्लास्टिक का होता था, आजकल वुड का हो रहा है। आप सुन लीजिए, ये चीज को ध्यान में रखिए और सुनिए मेरी 1 मिनट की कविता। कविता पे मैं ताली नहीं मांगूंगा, जहां कहीं अच्छे लगे आप बजा दीजिएगा कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वाह, वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। वाह 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 वाह। धन्यवाद। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। क्या बात है, वाह। अंगूठा छाप से शुरू कर अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना, और फिर थंब इंप्रेशन अर्थात अंगूठा छाप पर लौट आना। आहा आहा आहा। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वाह। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लीनन तक जाना, और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना, और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। वाह। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू क्या बात, घर को आए। क्या बात। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना, और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना, और वहां खुशी खुशी मडबात अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना, और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां सुन लीजिए इस कविता की, उसके बाद दिनेश बावरा जी को सुनेंगे। कविता अच्छी लगेगी। मेरा दावा है कि सुन लीजिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, डिजिटल इंडिया है आजकल, कोई याद करता है ना तो हिचकी नहीं आती, मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है। वाह। क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा। ऑक्सीजन का सिलेंडर बहुत होगा। अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, मैं ना इस प्रोग्राम का स्टार्टर था, मेन कोर्स पीछे है, लेकिन स्टार्टर अच्छा लगा हो तो एक बार तालियां बजा के बता दो कि मजा आया आपको। हाँ, धन्यवाद। हाँ, क्या है, कोई बात नहीं। दिनेश बावरा जी का परिचय आपने सुन लिया, शोरील पे देख ली, सौभाग्यशाली है। दिनेश बावरा जी की जो जर्नी रही है, मैं इनके साथ लगभग हर प्रोग्राम में रहता हूं। बड़े से बड़े कॉर्पोरेट हाउस हो, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन हो, हर प्रदेश के लगभग सभी सीएम जिनको दिनेश बावरा जी को नीचे बैठ करके सुनते हैं और हमेशा कहते हैं कि आप बिल्कुल पॉलिटिकल सटायर करो, हमें कोई बुरा नहीं लगता है। इस देश में लोकतंत्र हमेशा जिंदा रहना चाहिए कि कवि जो भी बात कहे वो स्वीकार होनी चाहिए। मैं केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से दिनेश बावरा जी को इस माइक पर बुलाना चाहता हूं।
कुछ बना चाह केवल 2 पंक्तियों के माध्यम से मैं दिनेश बावरा जी को अब बुलाऊंगा या कह देता हूं इनके बारे में कि दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी। इनके सम्मान में तालियां बजाएं अगली पंक्ति पर कि दिनेश बावरा जी मंदिर भी जाते हैं और मस्जिद भी, चर्च भी जाते हैं और गुरुद्वारे भी। किसी ने सही कहा है, परेशान पति का कोई मजहब नहीं होता भाई साहब। तालियां बजा दीजिए दिनेश बावरा जी के लिए। माइक चालू कर दो जी। अनाउंसमेंट है एक चाबी मिला है हमें गाड़ी का, मारुति सुजुकी। एक बार चाबी देख लीजिए, एक की मिला है हमें। प्लीज़ किसी का एक बार चेक कर लीजिए, किसी का हो तो एमसी कमेटी के पास है, ले लीजिए अपना। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो, बहुत अच्छा। ये होती है ब्रांडिंग। सुजुकी की चाबी जो है वो जानबूझ करके छोड़ी गई है। बोले कवि पैसा लेकर के ब्रांडिंग कर रहे, इन्होंने फ्री में करा दी अपनी। क्या बात है, बहुत अच्छा। हेलो, पक्का कोई इसका भी मारवाड़ी, वॉल्यूम बढ़ा देना थोड़ा सा। स्वागत है। पक्का कोई मारवाड़ी आदमी होगा वो। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। रोहित शर्मा ने सुनाया लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू लोग ही घर आते हैं, होशियार पड़ोस में जाते हैं। हाँ, समझने लगे मैं बस। मैं धीरे धीरे कोशिश करूँगा। हम दोनों कल कलकत्ता थे, तो जब मैं माइक पे आया था तो मेरे सम्मान में पूरे ऑडिटोरियम ने ताली बजाई थी। क्या बात। हाँ, बस क्या तरीका है भाई, वाह। महेंद्र कुमार जी बहुत अच्छा। सचमुच हमको आशा नहीं था कि हमारे बुलाने पे आप लोग आगे आ जाओगे और आप इतनी देर बैठ। देखिए, आप खाने और मेरे बीच में, मतलब खाना और आपके बीच में सिर्फ मैं हूँ। हाँ, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा कि खाना ठंडा हो जाए और आप गरम। हाँ, मैं बिल्कुल समय का ध्यान रखूँगा। 5-10 मिनट सुना करके आपके 5-10 मिनट मतलब जितना भी आप सुनेंगे। देखिए, 2 बातें हैं। हमको भगवान का आशीर्वाद है, खासकर पीछे वालों सुन लेना। हम कवियों को भगवान का आशीर्वाद है। जो हमारी अच्छी बातों पर ताली नहीं बजाता है, उसे अगले जन्म में घर घर जाके बजानी होती है। अब समझ गए ना आप लोग? हाँ, बस इतनी सी बात ध्यान रखोगे ना, आपको मजा आएगा, कोई टेंशन नहीं। जो लोग आगे बैठे हैं अच्छे लोग ही होंगे। और एक टिप्पणी करता हूं, आपको और मजा आएगा। पुरुष के सर पर 2 ही महिलाएं हाथ फेरती हैं, एक मां और एक बीवी। मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। आप अगल बगल मत देखो। कुछ लोगों का प्लॉट इतना बड़ा है, ऐसा लगता पूरे मोहल्ले ने हाथ फेरा हुआ है। ताली बजाओ जोरदार, ऊपर वालों पीछे वालों। मैं कोशिश करूंगा कि अच्छा कर दूंगा। हाँ, कोई नहीं। देखिए, हमारा जमाना क्या था, आज के यूथ और हमारे में क्या अंतर है? आज का यूथ हिस्ट्री बनाने में नहीं, डिलीट करने में भरोसा करता है। क्या अच्छी बात है। हाँ, हमारा जमाना अलग। अच्छा, हम भारतीय लोग हैं। उड़ीसा का आदमी, और उड़ीसा में भी भुवनेश्वर का आदमी, हाँ। एक बार सब लोग बोलेंगे जय जगन्नाथ। हाँ, बस इनके देखिए कहाँ है जगन्नाथ जी? जहाँ विराजित है उस जगह का नाम क्या है? पुरी है ना। जहाँ भगवान जगन्नाथ होना, वो जगह पूरी ही हो सकती है, अधूरी हो ही नहीं सकती है। वाह 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 वाह। हमेशा याद रखिए, क्या देवता है। लेकिन हम छोटी छोटी बातें बताएंगे। रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा सुनाया यार। ये मारवाड़ी हैं। मारवाड़ी और यूपी वाले में एक लाइन का अंतर होता है। मारवाड़ी आदमी काउंटर लगा के धंधा करता है, हम यूपी वाले इनकाउंटर करके धंधा करते हैं। हमारा धंधा इनकाउंटर से चलता है भाई साहब, और इससे ज्यादा मुझे इज्जत मिलनी चाहिए। सारे वीआईपी देवता हमारे पास हैं, है कि नहीं है? शिव जी हमारे पास, कृष्ण जी हमारे पास, राम जी हमारे पास, और इन तीनों को जो नहीं माने तो योगी आदित्यनाथ हमारे पास। हाँ, सीधा उन्हीं के पास दर्शन करना। अद्भुत मामला है। लेकिन अच्छा, मेरे पॉलिटिकल सटायर को सीरियस मत लेना। जब सामने बैठा हुआ मुख्यमंत्री नहीं लेता है तो आप क्यों सीरियस लोगे भाई साहब?
सीरियस लेना ही नहीं। देखिए दिसंबर महीना है, ये अंतिम महीना इस साल का। आप जनवरी सोचो, क्या साल गुजरा है। सोचा कुछ, हुआ कुछ, बराबर, किया कुछ, मिला कुछ। जबकि जनवरी में बोला गया था हैप्पी न्यू ईयर, गया ही नहीं। हाँ, सही बात, बहुत अच्छी बात है। देखिए, और भारतीय तो ये बोला मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, परेशान पति का कोई धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बोला इसने। भारतीय आदमी मंदिर जाएगा तो चप्पल ऐसी जगह रखता है जहां से भगवान भी दिखे और चप्पल भी दिखे, क्योंकि उसको पूरा भरोसा होता है कि भगवान तो कल भी यहीं मिलेगा। वाह, चप्पल का क्या भरोसा, मिले ना मिले यार। हाँ, हम वी आर इंडियन पीपल नो, हम भगवान पे उतना भरोसा नहीं रहता अपना चप्पल पे ज्यादा भरोसा है। चप्पल रहेगा तो ही तो भगवान तक पहुंचेंगे अपन। लेकिन आप लोग सब, लेकिन भारतीय आदमी की एक और खासियत है। भारतीय आदमी सत्यनारायण भगवान की कथा अगर 10वीं बार भी सुन रहा हो, तभी भी जब तक पंडित ना कहे कि अध्याय समाप्त हुआ, तब तक वो अक्षत फूल नहीं छोड़ता, क्योंकि वो ठीक से सुन ही नहीं रहा होता है। तो मुझे पता है कि आप मुझे भी ठीक से नहीं सुन रहे हो। मैं आपको बता दिया करूंगा कि अध्याय कहाँ समाप्त हुआ, वहीं ताली ठोकना। मेरी भी इज्जत रह जाएगी, आपकी भी इज्जत रह जाएगी। ये बोला मैं स्टार्टर हूं, ये वो सीए हैं, स्टार्टर ही इतना खा लेते हैं, मेन कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती भाई साहब। अध्याय समाप्त हुआ, हाँ बस ये पकड़ा आपने बात। बहुत अच्छे, इतना पकड़ना आपको मजा आ जाएगा। मैं दावे के साथ, देखिए मैं एक बैलेंस शीट हूं, आप मेरा ऑडिट करिएगा, आपकी वजह से ये बैलेंस शीट अच्छी रहेगी। क्योंकि आप अगर मुस्कुराएंगे तो मुझे मुनाफा होगा, और आप उदास रहेंगे तो आपको मुझे घाटा होगा। तो आप मुझे मुनाफे के साथ भेजेंगे कि घाटे के साथ, ये मैं आप पर छोड़ता हूं। और पहली अच्छी बात बताने जा रहा हूं। स्वागत है। फोटो खींचेगा? खींच। हाँ, क्या आज ये फोटो खींचेगा? कल अखबार में छपेगा, परसों अखबार रद्दी हो जाएगा, फिर वो एक जिलेबी के ठेले पे बिकेगा, फिर उस पर कोई लड़की जाके जिलेबी खाएगी, बाद में वो अखबार नीचे फेंक देगी, बाद में उसको कुत्ता चाटेगा। तो कुत्ते को टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं हमेशा ढंग से तस्वीर खिंचाता हूं यार। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजानी है आप लोगों, समझ गए ना? एक बात पर आगे से पीछे तक ताली चाहिए। याद रखिएगा, जीवन में नोट इकट्ठा मत करिए, बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठा करिए, पुराने भी काम आते हैं। जिंदाबाद, वाह। दुनिया में हंसिए, देखिए महिला और पुरुष में एक लाइन का अंतर है। पुरुष इस कान से सुनता है, इस कान से निकाल देता है। महिलाएं दोनों कान से सुनती हैं, फिर मुंह से निकालना शुरू करती। समझ गया आप लोग? सर भुवनेश्वर का आदमी, सर मैं सही बताऊं, आहा, भुवनेश्वर एयरपोर्ट पे हम उतरे, गाड़ी मिली, आ गया। अच्छा, वो जो ड्राइवर आया था, वो उसकी वाइफ का फोन आ गया, वो उड़िया बोल रहा था। तो वाइफ ने उधर से पूछा किसको लेने गया है? तो ड्राइवर ने बोला कोबी आया है, कोबी। कोबी? साला मैं टेंशन में, ये अपने को वेजिटेबल समझ रहा है यार। मां कसम बताता हूं भाई, बाद में उसको चाय पीने की अमल हुई तो हमको बोला हम भाई चाय पियेंगे, बहुत देर से खड़े हैं। और आप, तू भूल गया मैं बता रहा हूं उनको, आज मैं थैंक यू आपको नहीं दूंगा, इंडिगो को दूंगा। आज इंडिगो के चलते हम यहां हैं भाई साहब। क्या हुआ है इंडिगो, हो क्या किया है भाई साहब, क्या ताकत होती है प्राइवेट सेक्टर में। कोई करता होगा इंडिगो का ऑडिट ना, मां कसम बता रहा हूं, इस साल का जो ऑडिट होगा उसका, वो सीए के पास होगा ही नहीं, सीधे दिल्ली होगा पीएमओ में।
वही ऑडिट होगा आज इस बार। क्या कमाल का ऑडिट हुआ है। अध्याय समाप्त हुआ, ताली बजा दो, आपको अच्छी बात है। बहुत अच्छा, वाह वाह। भाई वो ड्राइवर आपका चाय पीने उतरा, तो चाय पीते पीते उसने, बगल में कुत्ता आया तो उसने कुत्ते को बिस्किट खिलाया। कुत्ता बिस्किट खाते ही कभी ऐसे पलटी मारे, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। हमने पूछा क्या खिलाया भाई? सर ये पतंजलि का था। खाते ही इसने योग शुरू किया है। क्या बिस्किट बनाया बाबा ने भाई, कुत्ते तक के ऊपर असर कर रहा। आदमी क्या लग रहा है भाई साहब? हाँ भाई का बाबा कमाली। और मेरे को सर सही बताऊं, महेंद्र सर कहाँ बैठे हैं, कभी भी मेरे को सर योग से फायदा हुआ ही नहीं। अच्छा, कभी हुआ ही नहीं। बाबा ने बोला जल्दी उठो फायदा होगा, जल्दी उठो फायदा होगा, जल्दी उठो। एक दिन मैं 4 बजे उठकर पार्क में गया, चोरों ने लूट लिया। मैं बाबा के पास, बाबा आपने बोला था सुबह उठने से फायदा होता है, इधर 4 बजे पार्क में गया, चोर ने लूट लिया। बाबा ने जो जवाब दिया वो बाबा दे सकता है। बाबा बोले बेटा चोर तेरे से पहले उठे थे। फायदा हुआ कि नहीं हुआ ये बता तू। हुआ ना। बाबा, एक साउथ का आदमी गया बाबा के पास, हड्डी टूटी हुई, नाक तोड़ी हुई, खून निकल रहा। बाबा मेरे को योग से बहुत नुकसान हो गया। बाबा बोला क्यों हुआ, क्या कर रहा था? और शीर्षासन कर रहा था, लोगों ने बहुत मारा। बाबा ने पूछा क्या पहना था? अध्याय समाप्त हुआ। तुम लुंगी पहन के शीर्षासन करेगा तो तुम्हारे को योग फायदा करेगा क्या? ये तो कुछ नहीं। मेरे दादा ने मेरे को एक दिन फोन किया, गांव में, मैं गोरखपुर से हूं, तो फोन किया, बोला मेरे को ज्यादा जीना रे भाई, ज्यादा जीना है मेरे को। मैंने कहा तो क्या करूं? बोले वो टीवी भेज तू, टीवी। तो क्या करोगे? टीवी देख के योग करूंगा मैं। अब मैं पिताजी की बात कैसे नहीं मानूं? मैंने टीवी भेज दी। अब यूपी गोरखपुर, आज के 20 साल पुरानी बात, खाट पे मेरे बाबा और टीवी पे पतंजलि के बाबा, 2 बाबा आमने सामने। उधर से बाबा ने इस बाबा को बोला नाक पे हाथ रखो और जोर से सांस खींचो। मेरे बाबा ने खींची, बोले और खींचो, और खींच ली। बोले और खींचो, और खींच ली। इतनी देर में लाइट चली गई। अब मेरे बाबा को ये पता नहीं किसके आगे क्या खींचना है, तो ऊपर वाले ने मेरे बाबा को ही खींच लिया। मेरे को योग से कभी फायदा नहीं, मैं सही बता रहा हूं आपको, ईमानदारी की बात बता रहा हूं, कभी फायदा हुआ ही नहीं है योग से। लेकिन योग करना चाहिए, और फायदा अगर नहीं लिखा आपने आपके लाइफ में, आप सीए तो फायदा नहीं होगा। मेरे घर में चोरी ना हो इसके लिए मैंने एक कुत्ता पाला, कुत्ता ही चोरी हो गया। फायदा नहीं लिखा ना भाई, अपन क्या करेंगे? लेकिन आप मेरे लायक हुए नहीं हैं। मैं कविता का आदमी और कविता सुनाता हूं। ये कविता का रंग जब हरिवंश राय बच्चन की कलम में उतरा तो उन्होंने लिखा रंग बरसे भीगे चुनर वाली, ये रंग आस्था की चौखट पर आया तो मीरा ने गाया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया, ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे रामा धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये रंग फिल्मी पर्दे पर आया तो सुनील दत्त साहब ने कहा कि रंग और नूर की बारात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं। ये रंग शायरी में आया तो शायर ने लिखा इसी रंग रंग में रंग है, तुझे रंग रंग में रंग दिया। मेरा रंग आया है रंग पर तेरा रंग चढ़ के उतर गया। ये रंग कविता में आया तो कवि ने लिखा इस रंग बदलती दुनिया में मैं रंग बेचता हूं, और हिंदुस्तान से प्यार हो, तिरंगे से प्यार हो तो एक एक हाथ खड़े करना। ये रंग जब 23 साल के नौजवान के सर चढ़ करके बोला तो गली गली में भगत सिंह ने गाया मेरा रंग दे बसंती चोला मैं। ये कविता का रंग है यार। आप लोग कागज वाह वाह। ये वाली ताली पहले बजा देते तो इतना खून खराबा नहीं करना पड़ता ना मेरे को। आप लोग सुस्त बैठा हुआ है, हम क्या करेगा भाई। देखो याद रखो, डॉक्टर और भगवान को कभी नाराज मत करो। अच्छा, कभी नहीं, क्योंकि भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है। बहुत अच्छे।
अध्याय समाप्त हुआ। समझ गए ना? और उड़ीसा का आदमी रोहित, मैं सही बताता हूं तेरे को, मतलब मैंने तो एक सीए से पूछा कि मरने के बाद भी मेरे को लोग याद करें, मैं ऐसा क्या कहूं? तो बोले कर्जा लेके मर बेटा। जी, मतलब मरने के बाद भी इतना याद किया जाएगा, पूरा खानदान तेरा याद किया जाएगा यार। तो क्या लगता है? लेकिन सच में आप लोग अगर ना सुने, हम किसको सुनाएं? एक अंग्रेज आया हिंदुस्तान, बोले क्या तुम्हारा हिंदुस्तान? तो हम तुलसी माता के पौधे के पास ले गए। हमने कहा ये हमारी माता हैं। अंग्रेज ने तुलसी माता के पौधे को उखाड़ा, पत्ते पत्ते अलग कर दिए, बोली ये तुम्हारी माता। अब मेरे अंदर का हिंदुस्तान जागा। मैं उसको एक खुजली के पेड़ के पास ले गया। मैंने कहा पिताजी से मिलो। उसने पिताजी को उखाड़ा। पिताजी ने ऐसा कार्यक्रम शुरू किया, ऐसा कार्यक्रम दिखाना शुरू किया कि अंग्रेज खुद ही बोला अध्याय समाप्त हुआ। हमसे जीत जाएंगे क्या? हमसे किसी अंग्रेज को तकलीफ देनी है? भुवनेश्वर के लोगों, बड़े लोगों, उड़ीसा के लोगों, कुछ मत करो। घर बुलाओ, कुर्ता पिजामा पहनाओ, पिजामे के नाड़े को 3 गांठ ज्यादा लगाओ, फिर गर्म दूध पिलाओ, फिर ठंडा पानी पिलाओ, फिर उसको चिल्ड एसी में बिठाओ। 25 मिनट बाद जो आपातकालीन परिस्थिति निर्मित होगी, अंग्रेज खुद वंदे मातरम गाने लग जाएगा। हम हिंदुस्तान के लोग क्या है भाई? लेकिन मेरी पॉलिटिकल सटायर का बुरा देखो, मैं यूपी से हूं, हम पॉलिटिक्स करते नहीं हैं, हमसे हो जाती है, हम करते ही नहीं है। अब पार्टियां देख लीजिए, बिहार में इलेक्शन हुआ, कहां कहां इलेक्शन हुआ। मैं बीजेपी का सबसे बड़ा दीवाना आदमी हूं। अच्छा, दीवाना, बुरा मत मानना, मेरा बस सटायर करता हूं, हमको हक भी है। हाँ, आप सीरियस मत लेना। बीजेपी इतना अच्छा ब्रांडिंग जानती है, दुनिया में कोई जानता ही नहीं। आपके ही मुख्यमंत्री को देखो, फोटो छपवा लिया, आए क्या? समझ गए ना? इससे अच्छी ब्रांडिंग कोई जानता ही नहीं है। लेकिन आप लोग सचमुच अच्छे लोग हैं। हाँ, मेरी बात का मुझे तो अच्छे भाई नीचे बैठ के सुनते हैं सारे लोग, और मुझसे कहते हैं कि तू सुना यार, तू समाज का डॉक्टर है। और हमें समाज को ठीक करने का, अगर समाज का डॉक्टर समाज के लोगों को ठीक करने की कोशिश नहीं करेगा तो कौन करेगा? अब देखिए, कांग्रेस कहती है पंजे का बटन दबाओ हमको जिताओ, अरविंद केजरीवाल कहते हैं झाड़ू का बटन दबाओ हमको जिताओ, हमारे यहाँ अखिलेश यादव कहते हैं साइकिल का बटन दबाओ हमको जिताओ, महाराष्ट्र में एक नाथ शिंदे साहब कहते हैं धनुष बाण का बटन दबाओ हमको जिताओ। बीजेपी ऐसा कहती नहीं है, वो कहती है तुम कोई भी बटन दबाओ, जीतेंगे हम ही। ऐसा राहुल गांधी का कहना, मेरा कहना नहीं है भाई। मेरा कहना हो ही नहीं सकता ना भाई, ऐसा कहना। आप समझ गए ना? हाँ, हम ऐसा भी कर लेते हैं कभी कभी, और मुझे गर्व है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों, चाहे कभी भूपेश बघेल रहे हों, चाहे अभी अभी नितिन गडकरी साहब हों, ये लोग सुनते हैं मुझे, उनको लगता है कि ये अच्छा सुनाता है यार। लेकिन मैं उड़ीसा में आया ना, एक सीए साहब को मिला, उनका दिलीप सर नाम था ना, दिलीप सर। हाँ सर, बैठे क्या कहीं? ओह माय गॉड सर, यू आर हियर सर। दिलीप साहब, आपको बताओ, दिलीप साहब, आपको मैं कहानी बताने जा रहा था, भूल गए। मैं पिछली बार आया, एक उड़ीसा के आदमी के, भुवनेश्वर के आदमी में मच्छरदानी में छेद हो गया, वापस करने नहीं गया, 1 फीट की दूरी पे दूसरा छेद बनाया, एक पाइप फिट की, इस छेद से उस छेद से बाहर कर दिया। मच्छर इधर से घुसे, इधर से बाहर निकल जाए। छेद वाली मच्छर से जो काम ले सकता है ना, वो सस्ते में इतने 2 लोगों को बुला ही सकता है भाई साहब, इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है। क्या बुद्धि है आप लोग। अच्छा, दुनिया के सबसे अच्छे दिमाग आप हैं, इसमें कोई डाउट है क्या? सबसे अच्छा दिमाग है आपके पास है दुनिया में। आईएएस आईपीएस के पास उतना दिमाग नहीं है, ये भ्रम मत पालना आप लोग कि आईएएस बड़े होते, बिल्कुल नहीं। सीए बड़ा होता है। मैं ये मजाक में नहीं कर रहा हूं, सीरियस कह रहा हूं। हाँ, सीरियसली बता रहा हूं। फिर भी आप ताली नहीं बजा रहे तो आप खुद ही सीरियस नहीं हो कि हम बड़े होते हैं। अब आप सीरियस होते तो बजाते ना कि मेरी तारीफ कर रहे हैं यार, कि बजाते हैं लोग बराबर कि नहीं। लेकिन आप लोग सचमुच बड़े लोग हैं, आप मानो या मत मानो, आप सचमुच बड़े लोग हैं।
मैं सही, हाँ सही बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीधे। एक डॉट अगर आपके हाथ से इधर लग जाए ना, इधर या उधर लग जाए, करोड़ 10 करोड़ हो जाता है। दुनिया में कोई ऐसी ताकत है क्या कि जो एक कॉमा लगा दे तो करोड़ 10 करोड़ की जगह भाई सही बात। जीरो कहां लगाना ये जितना आपको पता है, किसी को पता ही नहीं है भाई साहब, किसी को पता ही नहीं है। आपको पता है कि जीरो कहां लगेगा, मन कहां लगेगा, ये आपकी कला है, आपकी मेहनत है। आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको एक अच्छी बात भी बताना चाहता हूं। हम सर, जो लोग भी 90s के पढ़े लोग हैं, हम भी 90s के पढ़े लोग हैं, जो लोग, हम 5 साल के थे तो मेरे पिताजी मुझे स्कूल में जमा कराने ले गए। जमा? हाँ, एडमिशन अब होता है जी, पहले जमा ही होते थे। तो तब कॉन्वेंट कल्चर नहीं था ना, अब तो कॉन्वेंट कल्चर है। एक फादर घर में, एक स्कूल में, ट्यूशन अलग से, फिर भी फेल होने का डर। हमारे टाइम में कोई कॉन्वेंट कल्चर नहीं था, न 3G था, न 2G था, सिर्फ गुरुजी थे। एक ही थप्पड़ में नेटवर्क पकड़ लेते थे हम। हाँ सही बताते हैं। हमारा क्या तेवर होता था हमारे ज़माने में, क्या मास्टर होते थे साहब, मास्टर कमाल के होते थे। मैं सही बताऊं, ऐसे मास्टर साहब बैठे हुए, ऐसे हम खड़े, ऐसे मेरे पिताजी खड़े, तो मास्टर साहब ने पिताजी से पूछा किसका लड़का है, तो मेरे पिताजी इमोशनल हो गए, बोले मास्टर साहब आपका ही है। अब मैं टेंशन में कि जिसको हम 5 साल से बाप समझ रहा है, ये तो अपना है नहीं यार। अपने पिताजी तो यहां मास्टरी कर रहे हैं। सही बता रहा हूं, ईमानदारी की बात, जो मैं रियलिटी बता रहा हूं। पहले दिन ही ब्लैक बोर्ड पे मास्टर ने लिखा हिंदी, हिंदी के बगल में एक बिंदी लगाई। हमने मास्टर से पूछा ये बिंदी क्या है, मास्टर ने बोला ये अनुस्वार है। हमने कहा सर हमने रविवार सुना, सोमवार सुना, मंगलवार सुना, ये अनुस्वार क्या होता है? बोले ये हिंदी का श्रृंगार है। हम घर आए तो हमारी चाची ने बड़ा सा अनुस्वार लगा रखा था। हमने चाची से पूछा ये क्या है, तो चाची ने कहा बेटा ये चाचा हैं। हमने कहा चाचा हैं? हमारा माथा खराब हो गया। हम भाभी के पास गए, भाभी कौन है? बाबू ये भैया हैं। हमको लगा ये महिलाएं क्या पति को इज्जत देती हैं यार, माथे पे लगाती हैं। शाम को वॉश बेसिन में मुंह धो रहे थे तो देखा चाचा नल की टोटी से चिटका हुआ है, वॉश बेसिन की आईने से चिटका हुआ है। चाचा को जब मैं कमोड पे चिटका हुआ पाया ना भाई साहब, इतनी दुर्दशा मैंने एक दिन में चाचा की कभी नहीं देखी। सवेरे इधर लगाता है, शाम को कहां कहां चिटकाता है यार। ऐसा मत किया करो। जब मेकअप रूम के आईने पे 4-5 चाचा एक साथ चिटका हुआ मिला ना, हम कंफ्यूज हो गए इसमें हमारा वाला कौन सा है। अध्याय समाप्त हुआ। स्वच्छता, स्वच्छता, हाँ हाँ स्वच्छता, हाँ। और मैं, महेंद्र सर ने जो बोला ना, चेयरमैन साहब ने, मैं उनको नाराज नहीं कर सकता, मैं से बताऊं। और स्वच्छता में हम पुरुष लोग भरोसा करते हैं रोहित भाई, महिलाएं बिल्कुल नहीं करती, मेरा दावा है। अच्छा। और मेरा दावा अगर सही निकले तो ये ठंडी माहौल में भी आप ऐसे। स्वागत भाई, कविता। बहुत अच्छा। मैं आपको, हम 1-2 बातें और सुना सर। यहां तो बॉस और एम्प्लॉय में क्या अंतर है? अंतर इतना सा कि बॉस और एम्प्लॉय में क्या अंतर है? अंतर इतना सा कि बॉस अगर गाली गलौज शुरू करे ना, अगर गाली गलौज शुरू करे ना, तो लोग क्या कहता है, बॉस का बीपी हाई है, गाली गलौज शुरू करे, दिमाग। ये डिफरेंस जो है हमारे बीच में कमाल का है। अच्छा, आप तो बहुत ट्रैवल करते रहेंगे, मैं भी ट्रैवल करता हूँ मैं, ठीक है ना। तो शाम क्या हुआ, बोला तुमको इंग्लिश आता है? हमने कहा मैं बताओ। उसने बोला वो जो लड़की खड़ा है ना, उसको इंग्लिश में बड़ा रखता था मैं, तो उतना तो मुझे आता था। तो मैंने कहा बेबी कम हियर, दी थी। उसने बोला इसको वापस उठा है साला। तो पहले ऊपर देख के मेरा दिमाग खराब किया, क्या टेक्नोलॉजी है यार। तो मैंने बोला दिनेश भाई पानी चेंज करते रहता है, ये खाली प्रेसिडेंट नहीं चेंज करता है, टेक्नोलॉजी भी चेंज करता है। तो तुम ना ऐसा बटन दबाओ, ये तब। सर मैंने बटन दबाया, पानी आया, कुत्ते जैसा पानी पिया मैं एयरपोर्ट पे। दूसरे एयरपोर्ट पे बटन ही नहीं। क्या है भाई? भैया सर के एक बार दोपहर में घर गया तो महेंद्र सर ने कहा आओ दिनेश डिनर करो। कोई क्रीम नहीं है कि आप उदास हो और अपने चेहरे पे लगा लें तो आप खूबसूरत लगने लगे।
इश्क कुराते रहिए, दुनिया के सबसे ज्यादा खूबसूरत आदमी आप होंगे, ये मैं दावे के साथ बोल के जा रहा हूं। क्या बात है, वाह मैडम आपने बहुत अच्छा संचालन किया है, बहुत अच्छा इंट्रो किया, भाई ने भी बहुत अच्छा इंट्रो किया है। मतलब दुनिया में ना जो साड़ी के प्रति क्रेज है ना फीमेल में, माँ कसम बताता हूं मैं आप लेंगे अगर नई साड़ी देखी तो हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा हरे रामा हरे रामा जय जगन्नाथ, कहां से लिया जगन्नाथ हरे रामा हरे कृष्णा हरे रामा जय श्री कृष्ण हरे कृष्ण, 3000 में ठग लिया तुमको में। पूरे साड़ी को खाली जो डिस्प्ले में था ना, मतलब जो बाहर पहने होती हैं औरतें, उतनी साड़ी को छोड़ के सारे को काउंटर पे ला दिया उसने। फिर लास्ट में सेल्समैन को बोली, वो जो कोने में दिख रही है ना वो निकालो। सेल्समैन भी उड़ीसा का था, उसने बोला बहन जी वो पोछा लगाने का कपड़ा हो तो अपन फ्री में दे सकता है बहन, टेंशन। लेकिन महिलाएं हैं तो दुनिया है, मैं दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। ध्यान से सुनोगे तो आपको मजा आ जाएगा। लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक लाइन का अंतर है। लव मैरिज में अपने ही गर्लफ्रेंड, पीछे वालों सुन रहे हो ना आप लोग, जिसको चाहना उसी से ब्याहना, और जिससे ब्याहना उसी से निभाना, और जिससे निभाना उसी की सराहना, और जिसकी सराहना उसकी जाती। लेकिन कुछ मामलों में हम चाइना से, रोहित भैया आगे हैं, चाइना से आगे हैं। हाँ चाइना, कुछ मामलों में इंडिया चाइना से बहुत आगे है। देखो इंडिया में ब्रेकअप होता है ना तो आदमी को उतनी तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर चाइना में ब्रेकअप हो जाए किसी लड़के का तो उसको चारों तरफ एक ही चेहरा दिखाई देता है। अध्याय समाप्त हुआ। हाँ। चाहता हूं, कितने लोग सुनना चाहते हैं एक बार हाथ खड़े कर दे, मैं एक, अरे बाप रे, बहुमत आपके साथ है। कोई बहुमत नहीं है, देश में हाथ खड़ा नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, बस टाइम लगाने में बहुत बस समझा करो यार। अब हाथ का मामला है, लेकिन कोई टेंशन लेना नहीं। मैं आप लोग एक कविता सुनाता हूं, आपको अच्छी लगेगी। एक जमाना हमने जिया, ये जितने सामने बाबूजी बैठे हैं, आप लाभ दे करके जाता था। महेंद्र सर, दिलीप सर, इसके लिए शुभ और लाभ लिखा जाता था, दरवाजे भी 2 होते थे। क्या जमाना जिया हमने। हमारे जमाने में बाबूजी दरवाजे भी गले मिला करते थे। क्या अच्छी बात, वाह। हाँ, फ्लैट हो गया है, हमने कहा अब लाभ मिल गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए, तो हमने दरवाजे पर लिखवाया सुस्वागतम, क्योंकि लाभ की जरूरत नहीं थी। अच्छा, स्वागत कर लिया तो फिर हमने पढ़ाई की हमारे बच्चों ने, तो बच्चों ने कहा पापा ये स्वागतम मत लिखवाइए। अब बंगला खरीद लिया, फिर हमने लिखवाया कुत्ते से सावधान। क्या बात है, सावधान रहना है। लेकिन आपकी अच्छी तालियां आमंत्रित कर तारीख में न सुस्वागतम लिखवाइए न वेलकम लिखवाइए, बस 2 लाइन अपने दरवाजों पर लिखवाना शुरू कर दीजिए कि अतिथि मोबाइल बंद करके आइए और अतिथि सा सम्मान पाइए। जिंदाबाद। अतिथि मोबाइल लेके आता था, धंधे कैसे चल रहे हो, होते हैं वहां नहीं होते हैं तो वो जगह कभी पवित्र नहीं हो सकती भाई साहब। आप जहां हैं, अच्छी बात पर ताली बजाए, मुझे अच्छा लगा। मैं कवि, सूरज तेजी से ढल रहा है। एक संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब। आज भीड़ रोहित क्या कुंभ के मेले में, बाप रे बाप, इतनी भीड़ कुंभ के मेले में। इससे एक बात तो कंफर्म हुई कि भारत में पाप हो रहा है। अच्छी बात। हाँ, तभी तो लोग इतने गए ना। मैं भी गया, मेरी पत्नी बोली चलो, लेके वो बाबा के पीछे पड़े, खूब पैसा कमाए, भुवनेश्वर में खूब आशीर्वाद मिले। ताली अगली बात पे बजाना, अगली बात पे। वो नागा बाबा 10 मिनट सुना, 15वें मिनट में भड़क गया। वो बोला मैं नागा बाबा हूं ही नहीं, मैं नहाने गया था, किसी ने कपड़े चुरा लिए हैं बच्चा। संत ने टीवी पे प्रवचन देते हुए कहा कि अगर आप मोह माया से दूर रहना चाहते हैं तो मुझे लाइक कीजिए, साथ में मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज नहीं तो कल होना कर दिया है।
हमारा बुरा हाल कर दिया है। पहले मेरा बच्चा घर से बाहर जाता था तो मेरा जी घबराता था, घड़ी पे नज़र रहती थी, समय पे नहीं आता था तो मैं पड़ोस में पूछने चला जाता था। लेकिन अब मैं लाचार हूँ, बेकार हूँ, क्योंकि खुद के ऊपर खुद का बस नहीं चल रहा है। न मैं चिल्ला रहा हूँ न किसी है। जितना अंगूठा हमारा मोबाइल पे घूमता है ना, अगर अच्छी लग जाए, इसने हमारा सुकून छीना है, वार छीना है। क्या बात है, इसने छीना है, नहीं। वाह। ये कौन सी पीढ़ी बैठी है जानते हैं आप कौन लोग हैं, आपको पता है? देने वाली पीढ़ी बैठी है। और मशीन रहनी चाहिए जीवन में, लेकिन इतना भी मशीन नहीं लाइए जीवन में कि आप खुद मशीन होने लग जाएं। आपको मशीन का उपयोग उतना ही करना चाहिए, चम्मच से खाने में और हाथ से खाने में जो अंतर है वही मशीन से आने में और आप में वो अंतर है। वाह 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 वाह। भगवान जगन्नाथ बैठे हुए हैं, फिर भी हम पूरी जाते हैं। जहां जाते क्यों जाते हैं? उनकी उपस्थिति जहां, उसकी बात ही अलग है यार। तब आपको अंतिम लाइन सुना करके विदा करूंगा। चाहे हमने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार छीना, इस मोबाइल ने एक साथ बैठ के बतियाने वाला परिवार इसने छीना है। नई किताब की सुगंध को इसने छीन लिया है, बेटी की शादी के निमंत्रण छीना है, चैट की आड़ में संवाद छीना। आप कहेंगे कि नुक्ता चीनी है, इन कलेजे पे हाथ रख करके सोचेंगे तो कलेजा फट जाएगा, क्योंकि इसने आपके जीवन जीने का आधार अर्थात जिज्ञासा उत्सुकता चुनी है। दुनिया तूने कुछ अजीब सा परोसा है। आज हमें गुरु से नेट है, वो हिंदी में जाल है, और जिस मछुआरे का ये जाल है उसका नाम बाजार है, जिससे हम लोग थोड़ा थोड़ा हैं। इसलिए एक लाइन का अनुरोध है कि आप अपने हौसले को बुलंद करना सीखिए। मोबाइल चलाना तो सीख लिया है, थोड़ी देर बंद करना सीखिए। कविता खत्म हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबूजी, आपने जो खुशी दिखाई है, सारे लोगों ने जो तालियां बजाई है, जो इज्जत आप अरे खड़े होकर के, बड़ा आशीर्वाद किसी कलाकार के जीवन में हो ही नहीं सकता कि ऑडियंस खड़े होकर के ताली बजाते हैं कि आप कलाकारों को बुलाया, जिसने हंसाया भी और कुछ संदेश भी दिया। देखिए क्या है कि हमें जितना भी समय दिया गया था, मैं 2 मिनट में बस इस प्रोग्राम का समापन कर रहे हैं। दिनेश बावरा जी ने कैसा सुनाया वो आपकी तालियों ने, आपके स्टैंडिंग ओवेशन ने बताया है। हम उसके लिए कर रहे हैं। हम लोग टेलीफोन से चले थे और मोबाइल तक आ गए, लेकिन एक सच ये भी है कि जब तक फोन वायर से बंधा हुआ था इंसान आजाद था, और जब से फोन आजाद हुआ है इंसान फोन से बंधा हुआ है। हमें एक लाइन की कि थोड़ा दूर होगा जाना, पूरा नहीं। आप भी जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं आईटी सेक्टर में, जो ला रही है गवर्नमेंट, वो बहुत अच्छी बात है और हमें सीखना भी चाहिए। प्लस और अगर बात से सहमत हो जाओ तो तालियों से बताना। टेक्नोलॉजी से हमें एक बात सीखनी चाहिए कि अपने आप को अपडेट करते रहिए, वरना ये दुनिया आपको अनइंस्टॉल कर देगी। जमाना है 10 सेकंड की रील होती है, 10 सेकंड की, आदमी वो भी नहीं देखता है। 5 सेकंड में क्वेश्चंस लेवल 5 सेकंड का भी नहीं है। ऐसे में दिनेश बावरा जी ने 1 घंटा आपको सुनाया है, तो ये कलाकार। प्लीज 5 मिनट्स प्लीज स्टेप बैक फॉर 5 मिनट्स। 5 मिनट्स प्लीज। ओनली एक होंडा सिटी चाबी किसी को का चाबी प्लीज किसी के पास है या किसी को मिला हो? रश्मि सर का वो चाबी है, मिल नहीं रहा है।